हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, आपने देख लिया होगा मेरा थंबनेल कि आज हम एक बहुत ही अच्छा और डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि आज का जो स्ट्रीम है वो मेरे साथ जुड़ने वाली है एली, जो एक एक्स क्रिश्चियन है और जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है ताजमहल के ऊपर। इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया है और इसीलिए मैं स्ट्रीम यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि वी आर लाइक बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रीम है। और जो हम हमेशा सुनते आते हैं ताजमहल के बारे में, ताजमहल वॉज मेड बाय दिस एंड ताजमहल मकबरा है, और कई लोगों से ये भी हम सुनते हैं, स्पेशली हम ये बहुत टाइम हमने सुना है कि इट इज भोलेनाथ का यहाँ पर मंदिर था जिसके ऊपर इन्होंने ताजमहल को खड़ा किया है। बट एग्जैक्टली हमने इतना रिसर्च नहीं किया। हमारे साथ जो जुड़ने वाली हैं वो एली जी, जो एक एक्स क्रिश्चियन है और जिन्होंने 4 साल इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने रिसर्च किया। मतलब आज वो अगर बात कर रही हैं तो शी इज टॉकिंग बिकॉज शी हैज रिसर्च्ड। ऐसे नहीं कि बस कोई भी आ गया और कह दिया कि भाई भोलेनाथ का मंदिर था या ये था, या ताजमहल एक्चुअली it was not made by Shah Jahan, whatever. She has done research and she's going to tell us the truth and the facts today. तो मैं बहुत आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं आप लोग प्लीज इसको शेयर कर दीजिए ताकि हम जान सकें कि एक्चुअली क्या है ताजमहल और इसकी सच्चाई क्या है। हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग, एंड द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या जो हम सोचते हैं और जो टेक्स्ट बुक्स में हमें पढ़ाया गया है बचपन से, जो हम पढ़ते हैं कि शाहजहां मेड ताजमहल फॉर हिज 14th wife, I think 14th wife, or yeah, I think 14th wife, and when she was delivering the child and she died, and then he went into a different zone altogether। और बहुत कुछ हमने इसके पीछे की जो कहानियां हैं वो बहुत सारी हैं। और जो जिन लोगों ने ताजमहल बनाया उनके हाथ काट दिए गए, और वो पर्शिया से आए थे, वो ईरान से आए थे, जो यहाँ के मेन जिन्होंने इसको बनाया है। सो एग्जैक्टली व्हाट इज द थिंग, एग्जैक्टली इसके पीछे अगर किसी ने रिसर्च किया है तो उनसे जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आज मैं इनको मेरे साथ ले रही हूँ। इनका नाम एली है और ये मेरे चैनल पर पहले भी आ चुकी हैं। पहले मैंने इनसे मैंने स्ट्रीम की थी बहुत पहले, जब इन्होंने बताया था कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी क्यों छोड़ दी थी। और ये बहुत ज्यादा रिसर्च करती है, बहुत ज्यादा शी वेंट इनटू दिस full and this is not the first stream with her, this is my second stream with her, but I'm sure this is not the last stream with her, because we are going to do next week or maybe whenever she's free and I'm free, और हम एक stream और करना चाहते हैं on दलित। she's done extensive research on that too, तो हम वो तो बाद में करेंगे। लेकिन आज हम ताजमहल का जो भी वो है, थोड़ी इनकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है क्योंकि ये बहुत अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाती, बट शी विल ट्राई हर बेस्ट। और आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात सबको पता चले कि एग्जैक्टली ताजमहल का वजूद क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एलिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू कैन हियर मी। जी हाँ, नमस्ते पूजा जी, नमस्ते आपको, बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम, और आपके सभी दर्शकों को नमस्ते मेरी तरफ से। मैं बहुत खुश हूँ आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये जो रिसर्च है मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। और आपने इतना 4 साल लगा दिया एली, व्हाट मेड यू, आपको कैसे ऐसे लगा कि मुझे इसके ऊपर रिसर्च करना है एंड आई वांट टू फाइंड आउट द ट्रुथ, आई विल रिसर्च, एंड यू टुक 4 years। 4 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, लाइक 4 years यू हैव रिसर्च। सो व्हाट मेड यू लाइक कि मुझे इसके ऊपर मालूमात करनी है। जी, पहले मैं छुट्टी पर हिंदुस्तान वापस आ रही थी, और एक दोस्त ने मुझे पूछ लिया कि मुझे एक छोटा-सा ताज खरीद लो। ठीक है, ये तो मुसलमान थी, अरबी थी। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं खरीद लूँगी। लेकिन जब आई थी तब मेरा ओवरवेट था। जब आती है हिंदुस्तान, हम बोले नहीं, कुछ नहीं खरीदने वाले, कुछ नहीं खरीदने वाले। आगे सब कुछ 3 बहुत लगेज सारी है चीजें हमारे, हैं। और आई नो। ये तो ओवरवेट हो गया। तो मैंने निकाला, तो आके इधर आके वेस्ट में आके, अमेरिका में आके
तो मैं बोले हे भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं जाके इंटरनेट पर गई थी और शुरू करना खरीदने के लिए इंटरनेट ऑनलाइन पर। जी, तो वो टाइम में मुझे ये मिला, साइट मिला, वेबसाइट मिला कि जी, ताज इज नॉट अ हिंदू मुस्लिम मुगल मॉन्यूमेंट, इट्स अ हिंदू मंदिर। मैंने ये क्या बोल रहे हैं ये जो जर्नलिस्ट है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो हमें हुँ, पता है कि हिंदुस्तान में 1947 के पहले हर मस्जिद और हर चर्च के नीचे एक जी, मंदिर है। ये मंदिर लोग हुआ आया, करता था। मंदिर को तोड़ा, उसके ऊपर या उसको हुँ, वही जो मंदिर था उसको रीब्रांड करके, जैसे ज्ञानवापी मंदिर हुँ, उन्होंने रीब्रांड किया, और उसके नीचे तो हमें पता कि शायद कोई हुआ होता था, जी, लेकिन और मैंने और भी जांच किया, और उसको जांच करने के बाद मैं बोला, नहीं इसमें कुछ है, इसमें कुछ हुँ, है। तो अगली बार जब मैं हिंदुस्तान लौटी, तब मैंने एक किताब मैंने देखा कि सिर्फ एक आदमी था, पीएन ओक, वो जी, इसके ऊपर रिसर्च करे थे। तो मैंने जी, 3-4 बुक उसके इससे खरीद लिया, और मैंने देन वो अच्छे हैं उसकी जांच, लेकिन जो हुआ, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हो गया, पूरा की तरह कन्विंस। तो मैं वो समय दूसरा रिसर्च, पूरा इतिहास का रिसर्च करती, मुझे इतिहास का बहुत शौक है। मैं अब्राहमी के दीन से हूँ, तो मतलब ईसाई, एक्स क्रिश्चियन। तो मैं जी, उसकी उसके इतिहास को पता था, और फिर भी जांच कर रहे थे। और जी, मैं जब एक एक नाके पर आती हूँ, मैंने मैंने एक किताब को पढ़ के मैंने बताती हूँ कहा इसने ये लिखा, तो मैं बहुत पीछे जाऊंगी, मैं तो जेंगिस खान के पीछे भी गए हैं। तो जेंगिस अच्छा, खान, उसके तैमूर, सब कुछ उसके, उन्होंने क्या किया, उनका ये जो मकबरा था, उनकी ये जो फोर्ट था, ये क्या है वो, और उन्होंने वो जो तुर्की में ओटोमन सरकार था, वो लोग ने क्या किया, क्योंकि ये तो कजिन था। हाँ, ये तो जी, एक ही खानदान के था, तो वो जी, उनका मानसिकता एक ही है, तो अगर एक हुँ, करेगा, हुँ, दूसरा वो ही करेगा। ठीक है। हुँ, तो ये हुँ, मानसिकता से उसको देख के नीचे आया। और मुझे नहीं लगा कि मुझे एक दिन में ये 4 साल लगेगा, ये मुझे ये करना है, वो करना है, मैं सिर्फ मेरे लिए मैंने किया। ठीक है। जी, जब आखिर में मैं सब कुछ इकट्ठे करके मैंने बोला, हे भगवान, ये तो मैं किसके ऊपर रोक गई। तो मुझे लगा, मैंने देखा कि मैं सब एक चैप्टर में लिखा, और 30 पेज लिखा, और वो भी सब कुछ नहीं, क्योंकि हर बार आता, लेकिन मैंने जो इस्तेमाल किया, मेरे पास जो सबूत है, बहुत सारी चीज जो बोले देते हैं, लेकिन सबूत नहीं, तो मैं इसके बारे में नहीं बोल सकती। मैं बोल सकती जी, हूँ आपको कि हाँ, ये इसने ये बोला, उसने हुँ, ये बोला, हुँ, लेकिन सबूत होना चाहिए। तो मेरा जी, पास सबूत नहीं था, तो इसलिए मैं ये चैप्टर में नहीं लिखा। मेरे किताब वापस बाहर आने वाला है, मैं लिख रही हूँ मक्का, जी, एंड दैट इज ऑन इन वन ऑफ दीज, ये जो चैप्टर है। लेकिन ये जो है, 4 साल मुझे लगा, मैंने सोचा बाद में कितने साल लगा मुझे इसको करने। 4 साल लगा, कि बाद में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मैंने लिखा, और उसके बाद देखा कि नहीं, ये तो बिल्कुल, ये तो मुगल की नहीं था, इस्लाम की नहीं था, ये तो 5050 से पहले बना दिया। 5050 से, मतलब इस्लाम है ही नहीं था उसमें। जी, ओके। और कोई लोग बोल रहे तेजो महल्या, शायद जी, वो ये जो पीएन ओक ने बोला ये तेजो महालया, वो तो संस्कृत में है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि इतना सारे राजा साम्राज्य आए, हर साम्राज्य ने उसको एक नाम दिया, शायद वो तेजो महालया है। लेकिन ये पीएन ओक जो बोल रहे हैं, ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है। आई विल शो यू दैट इट्स गोइंग इवन बिफोर दैट। ओह! ओके, ये तो वैदिक पूर्वजों का है हमारा, और इट इज वन ऑफ द शिव मंदिर, लेकिन कौन सा, क्योंकि हमें पता है कि मंदिर जो है, दे आर आई थिंक 12 और 14, दो मिसिंग है इसमें, दो मिसिंग है। तो कौन है ये मंदिर, कहाँ है ये मंदिर, तो दिस इज वन ऑफ इट, जो मैं बोल जो पीएनओ ने बोल रहे तेजो महालया, शायद ये था। लेकिन आई एम गोइंग टू शो यू दूसरे जो कुछ इसके बारे में, आई विल दैट विल शो यू दैट ये तो मंदिर था पहले से, पहले इस्लाम के पहले भी था। ठीक है। जी, आई डोंट नो इफ यू कैन, ये जो आप मेरे जो स्क्रीन है अब वो जी, शेयर जी, कर सकते हैं।
या आई कैन शेयर, ओके जी। ओके, सो मैं अभी शुरुआत करने वाली हूँ। ताजमहल का नाम ताजमहल कहीं भी नहीं लिखा है। उसका हम्म। असली नाम, असली असली नाम जो लिखा है कहावत में, जी। रौजा ई मनूवरा, ये उसकी असली नाम रोजा है। मनोग्राम। रौजा ई मनूवरा, हाँ, मतलब मनोग्राम। इल्यूमिन, अंग्रेजी में बोलता है उसको इल्यूमिन टूम। ओके, तो इल्यूमिन टूम का नाम से ये बोला बोला दिया गया। और आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन टू यू। जी। नाउ द मुगल रूलर्स, जो ये जो बना दिया गया, वो हम्म। तैमूर का, वो जंगीज खान का है। वो जंगीज खान का, ये जो जंगीज खान उनके पूर्वजों थे, वो लोग बिल्कुल इलिटरेट थे। ओके, हम्म। और हम्म। वो जंगीज खान जो गुजर गया, उन्होंने उनके राजा साम्राज्य को बांध दे उनके बच्चे के बीच में। और एक बच्चे ने तैमूर, वो जो तैमूर आया ना दिल्ली सुल्तानेट का, उनके साथ शादी किया। और उसके उसके डिसेंडेंट जो है, ये तो मुगल लोग हैं। तो ये मुगल लोग हैं, जंगीज खान से होता है, ठीक है। और जी। खान का मतलब चीफ्टेन, मतलब लीडर, जो क्लैन का होता है, ट्राइब का होता है, हाँ। ये बस, या। और कोई कुछ नहीं है, मतलब जी। चीफ लीडर, जी। प्रिंस। सो जंगीज खान ने उसके ये जो राजा साम्राज्य, वो तैमूर, उसके बच्चे के में बांध दिया। और ये जो बच्चे थे, वो एक बार वो फारसी के, ये जो साम्राज्य था, 651 में फारसी के उन्होंने कब्जा किया ये स्थान, सेंट्रल एशिया को। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पर्शियन किंगडम। लेकिन वो असलियत पर्शियन नहीं है, वो सेंट्रल एशियन है। बट लेकिन पर्शियन लोग ने उनको कब्जा करके उन्होंने पर्शियन बना दिया। वो उसका जो भाषा है पर्शियन बन गया, ठीक है। सो ये जो सेंट्रल एशियन था, ये भी हमारे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया 3वीं और 4वीं ईस्वी में, सदी में। 3वीं और 4वीं सदी में उसका नाम था स्किंथियंस। स्किंथियंस का मतलब वो उसका राज्य का नाम था। और वे नॉर्थ इंडिया को, जो गंदारा था, आज है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हाँ, जी। तो पहले था गंदारा। और ये गंदारा के ऊपर उन्होंने उन्होंने ये फारसी के, ये जो पर्शियन का साम्राज्य था, उन्होंने कब्जा किया 651 तक। ओके, जी। एंड बिफोर दैट दे केम इनटू इंडिया। सो द नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जो उत्तर हमारा हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, ये लोग पर्शियनाइज हो गया पहले से, 1000 years बिफोर। ये तो नया नहीं है। तो उसके जी। हमारे जो भी आर्किटेक्चर है, वो पर्शियन का होता है। और समझ लेना चाहिए कि ये जो पर्शियन लोग है, वो एक ट्राइब था। ये बड़ी बड़ा साम्राज्य से शुरुआत नहीं किया, छोटा सा जी। ट्राइब से शुरुआत किया। तो जी। उन्होंने सब, जहां जहां भी उन्होंने कॉलोनाइज किया, उधर से उन्होंने ये जो संस्कृति लिया, उस संस्कृति को अपनाया। और वो संस्कृति बन गया पर्शियन। लेकिन पर्शियन उसका अपना नहीं था पहले में, ठीक है। अम, वो बहुत सारे बार वो, दे यूज द लोटस लीव। यू सी ताजमहल को देखे, इन दरवाजा के ऊपर ये लोटस लीव का दरवाजा है। जी। लोटस जो होता है, फूल जो जी। होता है, दे इट इज नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जी। इट इज नॉट नेटिव टू पर्शिया। तो वो टाइम में जो आर्किटेक्चर था, हर वो जो फूल और जो हमारे पेड़, हमारे फ्लोरा और फौना जो है, उसको जी। लेके उसको आर्किटेक्चर में बना, आर्ट में बना देता। तो इसलिए जो ये जो पेटल रोज, क्या बोलता है, अ, कमल, दैट कमल इज का ये लोटस। जो पेटल है, लीफ जो होता है, उसका लीफ ने बनाया उसका दरवाजा। और ये बन गया पर्शियन का दरवाजा। लेकिन ये पर्शियन का नहीं था, ये पर्शियन ने हिंदुस्तान से लिया, क्योंकि कमल का जो है नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। या। ओके, सो उसके बाद ये जब पर्शियन का सुल्तानत गया, उसके बाद ये तिमुर तिमुर का सुल्तानत आ गया। और तिमुर के बाद ये जो उसके बाद ये सेल्जुक टर्क्स, उसके दिल्ली सल्तनत, दिल्ली
तैमूर के बाद ये एक होता है, उसका जो कजिन होता है, ट्राइबल कजिन होता है, ये सेंट्रल एशियन का था, और ये सेल्जुक टर्क्स ने आया, और क्या बोलते हैं, ये जो अभी तुर्की है वो ऑटोमन जी, सुल्तान क्या है, ऑटोमन सुल्तान के पहले जो था ये सेल्जुक टर्क्स था, ये वही परिवार का था। मतलब जेंगिस खान, तैमूर, सेल्जुक, उसके बाद ऑटोमन, और ऑटोमन के ये जो नजदीक था वही समय का था, वो था हमारा मुगल का। वो, और सो द Ottoman Turks and the Mughal Sultanate, they were जी, cousins. They were of the same age, same ओके, era. या, Seljuk Turks was one era before them. Okay, ओके, so that's very important. Now, as the ये जो सेल्जुक का सुल्तानत डिक्लाइन हो गया तुर्की में, they gave way to another group called the Ottoman Empire. Okay, जी, so Ottoman Empire, हम लोग सब लोग को पता है कि Ottoman Empire क्या था। उन्होंने वो जो इसके पहले जो था वो बिजेंटाइन, ये 1498 1419 में ऐसा कुछ वो आया, और ये जो तुर्की में एनाटोलिया कहते थे पहले, वो एनाटोलिया का ये जो बिजेंटाइन सल्तनत था, बिजेंटाइन का साम्राज्य था, रोमन का सल्तनत, उन्होंने सब कुछ उनके जो आर्किटेक्चर लिया उनको रीब्रांड किया। इसलिए जो ये जो हैगिया सोफिया जो है, जो क्रिश्चियन का चर्च है, ग्रीक क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, उन्होंने बना दिया उसको मस्जिद, और ये एर्दोगान ने फिर से बना दिया उसको मस्जिद। हम्म, अभी ये जो ब्लू मास्क होता है वो भी बिजेंटाइन का है। हर एक उसका जो भी उसका आर्किटेक्चर जो है, जो बिजेंटाइन का था एनाटोलिया में, उन्होंने कन्वर्ट किया। ओके, उन्होंने नया नहीं नहीं डाला, बिल्कुल नया नहीं। तो हाँ, ठीक है, तो ये ही, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको, पहले में बहुत टाइम लगता है और बाद में बहुत पैसा लगता है। जो पुराना था उसको नीचे लाना है, उसके ऊपर उसको फिर से फाउंडेशन लगाना है, उसके ऊपर उसके फिर को मकबरा बनाना, ये तो टाइम और पैसा लगता है। और ये हम जी, किताब में लिखा है कि हाँ 10 साल में किया, 12 साल में, ये सही नहीं है। ये 100 तो 200 साल लगते हैं हर मकबरा को, हर हर जो मंदिर है, जो मस्जिद है, हर हर मस्जिद को, हर मकबरा को, हर मंदिर को 200 साल लगते हैं करने के लिए। एक टाइम में नहीं होता, इतना पैसा लगता है। तो ये लोग सिर्फ रीब्रांड करते हैं, मतलब नहीं कि ये जमीन से नीचे तक नया है। ठीक है, ओके, दे जस्ट ब्रांडेड अगेन, या, हाँ जी। समझ गई। तो एनाटोलिया में जो तुर्की है, उन्होंने ऑटोमन ने सिमिलरली हिंदुस्तान के सब कॉन्टिनेंट पर मुगल लोग ने वो ही किया। ओके, दे ये जो सिविलाइजेशन था पहले ही था, ये तो नया सिविलाइजेशन नहीं है, उन्होंने रेडीमेड मिला, वो क्यों नीचे जी, लाने वाले हैं। ठीक है, और हम्म, हर साम्राज्य और राज्य को वो ज्यादातर उसका बजट में डिफेंस में जाते हैं, जो हम आज भी करते हैं। हमारे हिंदुस्तान की ये जो बजट है, किस में जाता है, ये तो डिफेंस में जाता है। अमेरिका की डिफेंस का बजट इतना बड़ा है, सबका डिफेंस का बजट इतना बड़ा है, क्योंकि हमें we have to secure our civilization, secure our sovereignty। तो वो टाइम में भी ज्यादातर बजट उसका डिफेंस में जाता है। तो अगर डिफेंस में ज्यादा बजट करेगा, और ये सब मकबरा करने वाले बाद में पैसा कहाँ आने वाले हैं खाने के लिए, ये तो सब दासी थे, स्लेव थे, फिर भी इतने ही दासी कर सकते हैं ना, हम ज्यादा नहीं कर सकते। तो दे ऑल रीब्रांडेड। सो मुगल सल्तनत ने वो ही किया। ओके, जब once they got their foot in the door, because we know that मुगल जो बाबर के सल्तनत जो होता है, उन्होंने लोदी के साथ अलायंस किया, और ऐसा उन्होंने हिंदुस्तान के ये स्थान पर आए हैं। They did not waste any time rebranding। ये जो कुफर हिंदू सिविलाइजेशन के बोलते हैं, ये हमें बोलते हैं कुफर। नो प्रॉब्लम रीब्रांडिंग है, जैसे उनके ऑटोमन के कजिन था एनाटोलिया में, वो ही उन्होंने इधर ही किया। जी, ठीक है, सो वी नो दैट दे रीब्रांडेड लॉट ऑफ चर्चेस, वो ही किया। एंड वी सी ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है, ये जो बहुत सारे मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर, मॉस्क, जी, हाँ बहुत सारे मंदिर थे मंदिर है जो पहले, उन्होंने रीब्रांड किया। हाँ, या, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग्स, वो जो ऑटोमन का था, उसका नाम था सुलेमान द मैग्निफिसेंट। ओके,
उसने रूल किया, उसका राजा 1520 एडी टू 1566 एडी ने किया। सुलेमान लाइक जी। ऑल अदर, ये जो ऑटोमन्स था उसके पास हैरम था। आपको पता है कि हैरम क्या होता है? Harem. Yeah. हाँ, तो हैरम मैं उनके बता पास दूं थे। कि हैरम में इवन दे मस्ट बी नोइंग, आई विल जस्ट मैं बता दूं कि हैरम जहां पर स्लेव्स और जहां पर विमेन रखी जाती थी, दे हैड बिग बिग हैरम्स जहां पर ये अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए विमेन को रखते थे, दैट इज हैरम। और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि एली जो रीब्रांड की बात कर रही है, जैसा हमारा ज्ञान व्यापी जो मंदिर है, आपको पता चलता है कि दिस इज अ मंदिर, यू कैन मेक आउट, बट व्हाट दे डिड इज दे रीब्रांडेड इट। उन्होंने डह के पूरा उसको ध्वस्त करके नहीं बनाया, इट इज रीब्रांडेड, लेकिन वो जस्ट लिटिल बिट ऑफ हियर एंड देयर और नया एक मस्जिद बना दो, दैट इज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। अगर किसी को मतलब आई एम सॉरी बट अगर किसी को नहीं समझ रहा होगा इसलिए मैंने बताया। जी बोलिए। Okay, so so that is what they did. Just give me, let me go back here. So ये जो हैरम में वो उसने बहुत सारी औरतें, दासी जो स्लेव गर्ल्स था, वो ऑटोमन जी। वॉर कैंपेन से वो लाया गया, क्योंकि उनका ये जो ऑटोमन का सरकार था सिर्फ स्लेव्स ही बनता है और हम्म। कुछ नहीं। उसका their fuel policy, their energy policy was slaves. हमारे energy policy आजकल ऑयल है, वो टाइम में एनर्जी पॉलिसी उसका स्लेव था, स्लेव ही सब कुछ काम करते थे। सो जी। getting the slaves was important. The men were used for whatever building and things. The women were used for sex. Okay. फॉर सेक्सुअल प्लेजर। जी। Okay. So sex slaves उनके हैरन में भरा हुआ था। उसमें एक औरत थी, उसका नाम था, उन्होंने he fell in love with a girl and married a slave girl called हुरिम सुल्ताना। अंग्रेजी जी। में उसको बोलता है रॉक्सेलेना। ओके। एंड इट वाज वेरी अनयूजुअल था उनके कल्चर के लिए, क्योंकि वो जो बड़ा शाही लोग थे, वो तो क्या दासी की तरफ दासी को शादी के साथ शादी करने वाला तो कभी तक करने वाली नहीं थे। वो सेक्स करते थे, उसके जो बच्चे होते थे उसको इस्तेमाल करके वो उसका बच्चे बनते थे। अगर आदमी है, अगर लड़का है बच्चा, तो उनको अपनाते थे, उनको मानते थे, लेकिन अगर लड़की थे तो उसको फेंक डालते थे। ओके। ओह। सो ये तो हरम सुल्ताना एक दासी की औरत थी, वो फ्रॉम हिज स्लेव कैंपेन्स एंड ही फेल इन लव विद हर। जी। So, and he broke, and she was a Christian slave. He broke ओके। with tradition and married her. Now, he is said to have other wives. उसका और भी औरत थे, बहुत सारे औरत, but she made her presence felt. She was very strong. Ottoman sultans never married their concubines. So in 1533 या 1534 में उन्होंने शादी किया, and it raised eyebrows with the Ottoman elite. तो Ottoman के ये जो या। elite लोग हैं, establishment, उसको पसंद नहीं था। लेकिन क्या करूँ, ये तो महाराज थे, महाराज जो कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। And ye to normally these concubines would live in the harem. She lived with him in the court, all for the rest of her life. So when she died, okay, जब मर गए, ये तो कोर्टयार्ड में उसका कब्रिस्तान बना दिया गया, और उसका कोर्टयार्ड में वो मस्जिद था, वो मस्जिद था सुलेमान मॉस्क। Okay, Suleiman Mosque, if you go and uh, if you go and research it, this is the name of the mosque, Suleiman Mosque, and she's buried in that courtyard. Now that ओके। Suleiman Mosque is it's a domed mausoleum. Okay, I don't know if I can get it over here. It's a या। domed mausoleum. It's visited by millions of tourists even today. ओके। एंड ये जो मौजोलियम, ये जो क्या बोलते हैं उसको, समाधि है उसका, इट्स खबर। डेकोरेटेड इन जी। इज़्निक टाइल्स। Okay, and the Iznik tiles is depicting the garden of paradise, तो जन्नत को डिपिक्ट कर रहे हैं। और नाउ हमें पता होना चाहिए कि ऑटोमन सुल्तान खलीफ था पूरा उम्मा का, पूरा इस्लामी उम्मत का था। Does it sound familiar to you? Because the Taj is also supposed to depict the Jannat, the paradise of heaven. ये जो Taj Mahal के ये जो gardens है सब कुछ, they are supposed to depict the paradise. So that's why they supposedly built it by depicting the paradise. लेकिन ओके। ये जो सुलेमान के मस्जिद है, वो ही की तरफ है,
क्यों उन्होंने कॉपी कर दिया. हम्म. So 100 years later, 100 साल के बाद, another Turco Mongol empire, दूसरा राजा साम्राज्य हमारे मुगल का, उन्होंने वो ही किया. थर्ड, ये जो तीसरा एम्परर था, एम्परर अकबर, उन्होंने एस्टैब्लिश किया मुगल सल्तनत, मुगल खलीफत या. एंड अस्यूम, उसका टाइटल था अमीर अल मुमिनून, okay, commander of the faithful. Okay, it was ओके. due to it was surely due to an underlying rivalry with his Turco-Mongol empire on Anatolian soil. So from the time of Akbar, he was in competition with his Ottoman rivals, cousins, on the ओके. Anatolian soil. Okay, and that's why he called Akbar's ये जो पत्रकार थे, official पत्रकार, he called Agra in that the sublime seat of the caliphate. Like caliphate तो खलीफत तो एक ही होता है, खलीफत तो दो दो नहीं होता है, ठीक है. खलीफ जो है एक ही है, जो अच्छे. मोहम्मद ने भेजा हुआ या मोहम्मद के सक्सेसर है. हम्म. लेकिन हम्म. ये जो है अभी पैरेलल खलीफत. ओके, ये लोग को पता नहीं कि मुगल लोग ने, मुगल सल्तनत एक पैरेलल खलीफत थे जो अलाउड नहीं है. सो इन द क्रॉनिकल्स ऑफ हिज ग्रैंडसन एम्परर शाहजहां, सो अकबर की जो पोता है शाहजहां, हम्म. हम्म. जो नाम दिया गया, जो नाम है बादशाह नामा, आगरा इज referred to the abode of the caliphate Akbarabad. Now, growing up, I always heard the reference to him as Emperor of the Faith, Muminun. So this what he says here. Um, he's the emperor of the sublime emperor of the caliphate, um, and commander of the faithful. Shah Jahan meant king of the world. Pura dunya ka shersha the. शाहजहां जी. Okay, and his grandfather King Akbar also abandoned Islam. Now, in order to get his, be the sole king, because now he's sharing the हम्म. caliphate, वो उसके Ottoman cousin के साथ share करे, लेकिन in order to be his own person, his real king, he started his own deen. Okay, and वो है जी. दीन ई इलाही. ये जो अकबर या. ने किया हमें पता है, यस. इतिहास में लिखा है. एंड दिस वाज नॉट ओनली, मतलब उसने शुरुआत नहीं किया क्योंकि वो रिलीजियस टॉलरेंस था हिंदूज के साथ. ही वांटेड टू विन, वो जो सत्ता था उसके मुल्ला तुल्ला के साथ, और जो हम्म. उसका ये जो सत्ता था ऑटोमन सरकार के साथ, उन्होंने उसको निकालना था. उनको उनको करना था एक नया पूरा खलीफत, जो वो ही बॉस रहने वाले थे. Okay, so he did not want to share the power with his Ottoman and Islamic cousins, so that's why he made a new caliphate. So the theologians, ये जो orthodox है, मुल्ला लोग तुल्ला लोग, उन्होंने नहीं खरीदा ये. अकबर, they didn't buy it and they resisted. Yeah, they Okay, didn't want Dinelahi. I know that is a mixture of it's a new उन्होंने वो शुरू किया था कि where Hindus and Muslims he made a new religion which didn't work. Of course, it did not work that time. Yeah. that's it. So Akbar's son Jahangir, in his correspondence with जो Farsi Persian kings, used the title also Caliphate for the Empire of India. Okay, now Akbar's के son Jahangir, Emperor Jahangir, उन्होंने भी इस्तेमाल किया Caliphate जो Empire of India. So how can you can have an empire but you can't have a parallel Caliphate. Now it was जब जहांगीर गुजर गया, Shahjahan, he was supposedly Shahjahan, who supposedly commissioned the Taj Mahal. Do you not think he wanted to overpower the Turks and show them a thing or two of caliphates? He also, Shahjahan जो थे, उनकी बड़ा दम था. मैं तो आपको बता दूंगी, ये इतने सारे, इतने बड़ा हमारा हिंदुस्तान है, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते थे वो टाइम में. मुगल लोग भी उसको अपने आप को हिंदुस्तानी कहते थे. And they wanted to overpower the Turks. This supremacist rivalry between the two kingdoms was a fallout of centuries, thousands of years of personal vendettas that would have spiraled from tribal warfare. So इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं वापस गई जेंगिस खान के जमाने पर. जेंगिस खान जो पहले जो बच्चे थे,
उसके पहले भी ये जो क्लैन और ट्राइब्स थे सेंट्रल एशिया में, वो हिंसा थे उसके बीच में, और दे वर फाइटिंग एंड फाइटिंग, ये ट्राइब ये क्लैन, ये ट्राइब ये क्लैन, और ये ट्राइबल क्लैन के साथ उन्होंने इकट्ठे करके उसके जेंगिस खान ने बना दिया उसका एक साम्राज्य. ओके, बट दिस दे व्हेन जेंगिस खान डाइड, उन्होंने रुक नहीं गया, वो फिर से शुरुआत किया, और वही जो पर्सनल वेंडetta था, क्लैन का था, वही he it continued, and that's why when Genghis Khan split the empire between his sons went into different directions, they made different empires, different tribes, different clans, और हमें मिल गए ये जो राइवलरी, जो खलीफत था, ये जो राइवलरी था, वो पुराने का राइवलरी था, वो अभी सिर्फ this is just come down to our era, but it's a very old rivalry, very old rivalry. ये नया बिल्कुल नहीं है. Okay, so that is important that you understand. So there's a rivalry that's going on between the Mughal Sultanate or Ottoman Sultanate. So going one step further, Suleiman जो है, the former emperor of the Ottoman Empire, would have been on Shah Jahan's mind. उसके दिमाग में था जरूर commissioning the Taj for his beloved wife, or not so beloved Mumtaz, would be the perfect way to upsurge the Ottoman Suleiman's mouth. So Suleiman जो था, Suleiman the Magnificent, उसका भी बीबी था, उसकी भी बीबी ने वो मर गया, और उसके भी बीबी ने कोर्टयार्ड के वो जो सुलेमान मस्जिद है उसमें उसका कब्रिस्तान बना दिया. ठीक है, तो ये जो हमारा शाहजहां है, आपको समझ, you don't you think that he's going to do the same thing? If he's a rival, he's saying, well, I'm also going to do the same thing. आप ही नहीं करने वाले तो मैं भी कर सकती हूँ, और मैं भी आपको बता सकती हूँ कि मैं ज्यादा कर सकती हूँ आपसे. ठीक है, ये उसके दिमाग में था. So another place which is also a Byzantine monument rebranded as Ottoman architecture, which is the Suleiman Mosque. So the domed mausoleum nestled in the gardens of paradise. So ये जो Taj का मकबरा था, nestled, as it says, nestled in the gardens of paradise, would have been the perfect upstart to his rivals. Thus, from this story, we get the Taj Mahal, the palace of love. Okay. Or is it really a palace of love? Okay, the story fits perfect. ये जो कहानी है perfect story है. हाँ, ये जो बॉलीवुड जैसे स्टोरी है, लेकिन असलियत है, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये मॉन्यूमेंट जो है, ये अभी आपको सबूत बताने वाली हूँ. So now Shah Jahan, okay, let's go to Shah Jahan. His birth name, okay, उसका असली नाम है शाहजहां नहीं, who was born Prince Shahabuddin Muhammad Khurram, okay, and his royal title was Abdul Muzaffar Shihab al-Din Muhammad Sahib-i-Kirani Sani Shah Jahan Padshah Ghazi, son of Nur al-Din Jahangir Padshah, son of Akbar Padshah, Humayun Padshah, son of Babur Padshah, son of Umar Sheikh Mirza, son of Sultan Abu Said, son of Sultan Muhammad Mirza, son of Miran Shah, son of Amir Timur Shahib Kiran. Okay, so it's a full chain, yeah. Yeah, so the full chain. He's showing you he's a descendant of Timur and the whole 9 yards. The title, ये जो title दिया गया है, Padshah, it's a superlative title and it's conferred on the Mughal king. So अंग्रेजी में उनको बोलते हैं emperor, लेकिन वो जमाने का उसके भाषा में बोलता था Padshah. Padshah is like an emperor. Pad means master. Shah means king. He's the master king. Okay. His wife for whom he built the Taj Mahal, ये उसकी बीबी था, उसका भी दूसरा नाम था. उसका ऑफिशियल जो कहानी है, जो पत्रकार में लिखा है, उसका नाम था अर्जुमुंद बानु बेगम. And her married name is Mumtaz. जब शादी किया उन्होंने, उसका नाम था मुमताज अल जमानी. Very important. Okay, लिखो, जो भी सुन रहे लिखो, ये इसको देख के लिखो. पहला था अर्जुमन बानु बेगम, बाद में मुमताज अल जमानी.
वो जो कैलीग्राफी जो लिखावट हुआ है ताज क्या बोलते हैं दीवारें के ऊपर समाधि के ऊपर, जी, जी। her name is Mumtaz Mahal. Okay, हुँ, so हुँ, to match her name, transcribed it was transcribed on the mausoleum, on the from the mausoleum to the official chronicles. Okay, and it was transcribed after her death in 1631. She was put down as Mumtaz Mahal in some text. So they could have easily changed her name from Mumtaz Al Zamani, from married जो शादी किया मुमताज अल जमानी, हुँ, मौत के बाद उन वो बन गया मुमताज ई महाल. Okay, हुँ, हुँ, now to show that the mausoleum वो जो समाधि है उसके it was named after her, because you can't put the zamani means she's the queen of the land. Okay, हुँ, हुँ, वो जो रानी था पूरा साम्राज्य का रानी था, लेकिन ना उसका मृत्यु हो गया तो उस वो महाल में समाधि था, तो महाल जो उनका था तो नाम बदल गया समाधि का, तो बन गया मुमताज महाल. सो जी। लोग पूछने वाले हैं कि ये क्यों नाम दिया गया, क्यों उसका हाँ, असली मुमताज़ नाम, महल की जी, जी। okay? असली नाम क्यों इस्तेमाल नहीं किया ना. एक चीज है, महाल का मतलब पैलेस और मैंशन उर्दू और हिंदी में, ठीक है. व्हेन दे इंसिस्ट, वो जो मैंशन था, why do they insist on naming her after a mansion which is या hideous? क्यों उसका नाम दिया गया मेंशन के महाल से. महाल इज अ संस्कृत वर्ड का मतलब महाल्या. ओके, मीनिंग dwelling, place of refuge, place where traveler stops to stay, and so that is why she's called that is the meaning of mahalya. Now she's also descendant from the from Persia. She's not a native to the Indian subcontinent. She's supposedly a saida. Okay, you know what saida ka matlab, ye jo said दैट se कम्स hota फ्रॉम द प्रॉफिट या मतलब जो प्रॉफिट के लिनेज से आते हैं, वो सैयद होते हैं। जी, hai, theek hai. So जी। that is what it is. So it's very important fact that nowhere in इतिहास में लिखा है, nowhere ये जो कोर्ट का असली नाम लिखा है, nowhere लिखा है कि ये ताजमहल. So it's really a later addition. The Taj is always mentioned. The Taj is always mentioned. असली नाम ताज का जो मुगल सल्तनत के टाइम में था, जो असली क्रॉनिकल्स हैं, उसका नाम है रौजा ई मनूवरा. And so what would have happened is Shah Jahan's wife, who was given the name Shadi ke baad Mumtaz-e-Zamani, became मुमताज़ Mumtaz-e-Mahal महल या in death. हुँ, हुँ, This after the Mughals lost their power. Okay, Mumtaz Mahal became Mumtaz-e-Mahal became Mumtaz Mahal. So the E got nikal gaya udhar se, and over time the new name it became Mumtaz Mahal of the of the mausoleum itself. So samadhi ban gaya Mumtaz Mahal. Okay, हुँ, हुँ, and then the Mughals lost their power. Okay, and then the natives of Agra would have shortened it to Taj Mahal, Taj. Instead of saying Mumtaz Mahal, they said Taj Mahal. And when Angrez jo aaye the, unhone bana diya Taj Mahal. You know how anglicized it is. It's like, oh yeah, Taj Mahal. You know, so Taj से बन गया ताज महाल. So पहला हुँ, था मुमताजी जमानी, बन गया मतलब मुमताजी महाल. मुमताजी महाल बन गया मुमताज महाल, बाद में बन गया ताज महाल. Okay, and from that Taj the English anglicized it to Taj. So it's been an evolution. Okay, so the original official appellation of the tomb was forgotten. ये तो भूल गए सब लोग. एंड कोई भी सरकार हुँ, 1947 से आज तक उन्होंने वेरीफाई फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं किया. जैसे 95% के हमारे जो पुस्तकें में लिखा है स्कूल में, सब कुछ बकवास है, हमें पता है, ठीक है. ऐसे ही डाला गया 95%. 70 इयर्स 75 इयर्स से किसी ने भी कोशिश नहीं की, क्योंकि अभी तो बन गया वोट बैंक का इस हुँ, विषय, ठीक है. हुँ, हुँ, या हुँ, So ये नाम का मतलब है. So we've gone to the story where he got the story from. Now we went to the name of Mumtaz Mahal and how they got the name Taj. Now we're going to go to the purchase of the mausoleum. For लोग जो समझते हैं कि शाहजहां ने किया, शाहजहां ने नहीं किया. ये जो मकबरा है, ये समाधि है, ये शाहजहां ने खरीद लिया, और ये
उनके ऑफिशियल क्रॉनिकल्स में, बादशाह नामा में, शाहजहां नामा में लिखा हुआ है, अभी तक है. ओके, सो ओके. 6 months after the death of Mumtaz Mahal in 1631 in childbirth, उसका ये जो शरीर, जो शरीर, बॉडी was इनिशियल बेरिंग प्लेस बुरहानपुर से आगरा में लिया. ओके, 6 months, सिर्फ 6 महीने के बाद. एंड इट वॉज बेरिड इन द ग्राउंड ऑफ द ताज महल. ओके, सो द आधिकारिक कथाकार जो है, चार आधिकारिक कथाकार है. चार मतलब नहीं, एक नहीं, मतलब मिस्टेक कर सकते नहीं, चार है. ओके, ये लिखता है, ये किताब में लिखता है, ऑन द सदर्न साइड ऑफ अकबराबाद joining the city on the bank of the river Jamuna, a tract of land which formerly was the house of Raja Mansingh, but it was at that time in the possession of his grandson Raja Jai Singh, or Raja, as a token of his sincerity and devotion, because they were in alliance, okay, donated the said land and considered this to be a source of happiness. However, His Majesty, in exchange for that, granted the Raja a lofty house, Khana-e-Allah, which belonged to the crown estate. Okay, आपकी समझ में आया? You want me to say it in Hindi? Yeah. June Yeah. 6, For my viewers, huh? जून 1631 ईस्वी में महारानी मुमताज की प्रसव की मृत्यु के 6 महीने बाद उनके शव को, उनके शरीर को उनके उनके बुरहानपुर बॉडी से, को. हाँ, से आगरा लाया गया. इससे ताजमहल की जमीन पर दफनाया गया. कजविनी नोटिस, वो जो पत्रकार जो थे, लिखित अदालत से लिखता है मैं कि जैसे ही अकबराबाद के दक्षिण हिस्से में था, शहर के सतह यमुना नदी के तट पर जमीन का एक हिस्सा, जो पूर्व में राजा मानसिंह का घर था, लेकिन इस समय उनके पोते राजा जय सिंह के कब्जे में था, और राजा ने अपनी ईमानदारी और भक्ति की प्रतीक के रूप से उक्त भूमि को दान कर दिया, और इसे खुशी का रौत माना. हालांकि उसके बदले में उसकी महिमा ने राजा को एक ऊंचा घर दिया, खाना-ई-आला, जो कि ताज की सपित और संबंधित था. ये लिखा, ये तो पहला पत्रकार लिखा, कथाकार लिखा. दूसरा जो लिखता है वो ये लिखता है कि as there's a tract of land of great eminence and pleasantness towards the south of that large city, on which there was before this a mansion of Raja Man Singh, and which belonged to his grandson Raja Jai Singh, and it was selected for the burial place on the tenant of paradise. क्योंकि इस बड़े शहर की दक्षिण की और महान परिचिता और खुद सुखदा की भूमि थी, जिस पर पहले राजा मानसिंह की हवेली थी, और जो अब उनके पोते राजा जय सिंह की थी. यह जन्नत के उस किराएदार की कब्रगाह ने लिया चुना गया था. So it was in it's in the hands of Raja Jai Singh, Yes, yeah. and he gave it. Now there's a third fellow who's saying the same thing. Okay, after reaching Akbarabad, it was entrusted to the earth in the heaven-like tract of land situated on the south side of the abode of the caliphate, overlooking the river Jamuna, which belonged to Raja Mansingh, and it to acquire it, His Majesty the Caliph ranked had given in exchange a mansion loftier than the said mansion to Raja Raj Singh. So the copy of the royal farm in ये असली deed जो है वो उसके ऊपर लिखा गया, डेट भी लिखा गया 26 जुमादा the second 1043 6 regal year, जो अंग्रेजी के में लिखा है 28 December 1633. Okay, so my thing over here is it's written here they bought the mansion from Raja Jai Singh, and they exchanged another mansion in return, which is loftier than the original mansion. So you're like,
हम सोचते हैं कि अगर दिया गया इन रिटर्न उसने दूसरा मेंशन को दिया गया वो जो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि बेटर था, राजा हाँ। जय सिंह से क्यों लिया? अगर आपका ये जो हुँ, महाल था पहले ही से ही अच्छा था, वो मान सिंह से क्यों लिया? क्योंकि मान सिंह से आपने उन्होंने कब्जा कर दिया या उसको फोर्स किया गया। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हम देखते हैं, हमें पता होता है कि इसने खरीद लिया, उन्होंने एक्सचेंज में खरीद लिया, जो पैसा के एक्सचेंज में नहीं, जो जमीन के एक्सचेंज, महाल के एक्सचेंज, तो एक्सचेंज होता है। तो ये लिखा हुआ है, and it is proof over here, and it says, be it known through this glorious famine का मतलब deed marked by happiness, खुशी से मनाया गया है, which has received the honor of issuance and dignity of proclamation, that the mansion, ये जो हवेली जो है, detail in the endorsement, ये जो deed में लिखा है, together with its dependencies, जो भी दूसरा छोटा महल है उसके आसपास में, which belongs to the August Crown properties, have been offered to the pride of peers and the vessel of the monarch of Islam, Raja Rai Singh. So इसमें लिखा गया है कि राजा राय सिंह एक वासल थे, मतलब छोटा किंगडम था, छोटा राजा था, उनके अलायंस में था, मुगलों के अलायंस में था। ही वॉज अ हुँ, स्मॉल वेसल किंगडम, सो उसका कोई हुँ, शक्ति नहीं था, ताकत नहीं था, सत्ता नहीं था। He was हुँ, at the dependence of the Babur of Shah Jahan. शाहजहां, जी। And in exchange for the mansion formerly belonging to Raja Man Singh, which that pride of the grandees was willing and voluntarily donated for the mausoleum of that queen of the ladies of the world and the ladies of the age, the honor of daughters of Adam and Eve, an upholder of the stature of the chastity of the time, that Rabia of the world and chastity of the world religions, that recipient of divine mercy and pardon, Mumtaz Mahal. So they are talking, बड़ा बड़ा शब्द इस्तेमाल करे, उसको डिटेल में लिखना है, बट आखिर में ये जो लिखा है कि कंफर्म करते हैं दैट इन हिज ऑफिशियल कोर्ट पेपर्स कि उन्होंने एक्सचेंज में लिखा, एक्सचेंज में राजा मान सिंह से जमीन लिया, जमीन ही नहीं, महाल हुँ, लिया, पूरा हुँ, महाल लिया, और हुँ, in return they gave him something else. So there's also something else on the reverse of the deal. It's फिर से लिखा स्टैम्प के साथ, उसको ऑफिशियल स्टैम्प के साथ, the mansions, the haveli, together with the dependencies belonging to the August Crown estate, in exchange for the haveli belonging to Raja Man Jai Singh, which that pillar of the state, for the sake of the illumined tomb, willingly and voluntarily donated it as a gift. Peshak Naumandan. I don't know what it means there, but you can see it. So the attestation and the seal likha hai, certify the true copy of the original, the servant of the religious abode of Muhammad Abul Barakat. Okay, and so we have बहुत सारे एविडेंस है हमारे पास कि जो दिखाते हैं कि शाहजहां not only received land but a mahal from the raja, Hindu Raja Jai Singh. So up till here you all followed. या Okay, now we'll go and see 6 months के बाद उन्होंने, आपको पता है कि उन्होंने लाया दिया गया उसके शरीर, वो बुरहानपुर से इधर तक, समझ समझ हुँ, लीजिए, हमें हुँ, पता हुँ, है, हमें सबूत है अभी कि ये महल था पहले ही से, और हमें पता है कि 6 महीने में उसको नीचे नहीं, टाइम लगता है, ये जो टू मेक द डीड, टाइम लगता है टू मेक द negotiations. Okay, so by the time they make the negotiations of the of this land, of this deed, you have at least 3-4 months that are passed. There's monsoons in India, so कोई जो भी काम है अक्टूबर की पहले नहीं ला सकते, और उन्होंने दिसंबर में लाए उसके शरीर आगरा में, तो 2 महीने में वो जो महल है उसको नीचे ना नहीं ले सकते, और 2 महीने में दूसरे महल नहीं खड़ा कर सकते, तो कैसा खड़ा किया, क्योंकि ये जो कब्रिस्तान है उसकी ये जो कब्र है, ये 3 और 4 माले पर है, तो कैसे किया ये उन्होंने, ये जो महल है वो पहले से ही था, उन्होंने सिर्फ रीब्रांड किया. Okay, so हुँ, we'll go and see the proof now. Okay, death या anniversary celebrations of Emperor Mumtaz e Zamani, महारानी मुमताज ई जमानी की, मुमताज महल की, I don't know how you pronounce it, Punya Shakti Samrajya, official anniversary. So the court year, official court chronicles of Shah Jahan,
on the occasion of her first death anniversary, that somewhere in June. It states the assignments were made to the dispensers of the affairs of the government and good fashioners of the workshops, कारखाना जो राज्य की था, to make the necessary arrangements for the occasion. And acting in compliance with the royal order, they set up in the courtyard of the auspicious mausoleum. So they are saying in the courtyard of the mausoleum, that means the mausoleum was still there. Okay. कोर्टयार्ड बना हुआ है, एक साल में नहीं बना सकते क्योंकि 6 महीने पहले उन्होंने खरीद लिया. Sorry, heaven like tents, each one of which would be excellent substitute for the dal badal. And on their sides and borders, there were erected canopies of painted gold brocade velvet. So they're telling you how they have already started the celebrations of the 1 year anniversary. And they're talking about the mausoleum. That means mausoleum to khade hi tha. It Okay, was already erected. it Yeah, was it was already. already there. Yeah. What is important over here is the part that's highlighted in bold. There is no way in 1 year since the death of the queen's death, Mumtaz. Yeah. the courtyard and the mausoleum was already ready. Okay, until, like I said, there was no way it was then. So now in the chronicles we see that's already a mansion on the piece of land. ये जो महल थे पहले. Now nowhere जहां भी नहीं, कहाँ भी नहीं लिखा है वो जो chronicles में कि उन्होंने destroy किया ये mansion को, कहाँ भी नहीं लिखा Okay. है. So I will show you now what it says. Okay, so with the mansion already on the ground, it is not मुश्किल नहीं है तो समझने में कि ये ताज जो completed है, उन्होंने बोला complete किया हमें कि record time में किया, नहीं हो सकता है. हमें पता है क्योंकि उन्होंने खरीद लिया और पुस्तक में क्रॉनिकल्स में लिखा हुआ है. कथाकार ने लिखा है, ऑफिशियल कथाकार. हाँ, ये तो कोई मामूली से नहीं है. It was not difficult to understand the second anniversary of Mumtaz Mahal's death. One of the chroniclers, Tabai says, and Bedal Khan, superintendent of the Royal Goldsmith Establishment, submitted for the inspection of His Majesty a recently completed gold screen Mahajar Zarini, on which 40,000 toklas of gold had been expended, and which was decorated with inscriptions and floral designs and hanging lamps. And in compliance with the lofty decree, that railing screen was installed around the illumined resting place, and constellation orbs and lamps were suspended. तो 2 साल में कैसे हो सकता है? 2 साल में, अभी 2 साल उसके मृत्यु हो गया, लेकिन 1-1.5 साल आपने खरीद लिया, आपने नीचे कर दिया, आपने दूसरा फाउंडेशन डाला, आपने फिर से उसके ऊपर अभी ये जो मौजोलियम रौजा बनाया, समाधि बनाया, और आपने पूरे तरीके से मना रहे गोल्ड स्क्रीन 40 टोकलास, इंस्क्रिप्शंस ऑफ फॉल. कैसे Yes, करते? 1.5 साल में नहीं हो सकते. ओके, सो मतलब है कि उन्होंने वो खड़े थे, उन्होंने नीचे नहीं डाला. ओके, मतलब उन्होंने, हाँ, they did not, उन्होंने उसको ध्वस्त नहीं किया, उसको ही जो बना हुआ ही था उसके ऊपर ही उन्होंने काम किया. हाँ. जी. So, and here's another one. And in the evening, और शाम को वो शानदार मकबरा बन गया जैसे ही सिनाई के विशाल पर्वत की प्रकृति थी. इस शानदार खलीफा के शयन कक्ष की उस मोमबत्ती की चमकदार उपस्थित के चमकदार प्रतिबिंब के माध्यम से इस साम्राज्य के रॉयल सरगिलाइयों की पहली महिला दुनिया की राजकुमारी की और उसकी लोग बेगम साहिबा जानकर. So he's talking about his daughter over here. In the evening, the illustrious mausoleum became, as it were, the replica of the expansive Mount of Sinai. Okay, so they're saying that it's reflecting Mount Sinai where Moses saved his slaves. Yeah. Through the shining reflection of the radiant presence of the candle of the bedchamber of the glorious caliph, the first lady of the royal kingdom, the princess of the world, and its people, Begum Sahiba Jahanara. Jahanara is the daughter of the Shah daughter Jahan. of Shah Jahan. Yeah. Okay. So how can it shine in within 1.5 years? You're telling me आज भी नहीं कर सकते हम 1-1.5 साल के बाद. So we see the mausoleum is already existent.
not only existed, but they constructed a gold screen around the ground. The mausoleum shone in the evening like light from Mount Sinai. Perfect proof. If it's shining, it has to reflect on marble. That means the marble was already in place, or that the mausoleum was already standing and built by Hindu kings prior to Shah Jahan taking over. तो उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने खरीद लिया, के एक्सचेंज में. सो दूसरे आधिकारिक कथाकार, उसका नाम है कजानी, क्योंकि चार होता है. And on all four sides of the platform on the plinth, he says, of the building of the holy tomb, the foundation of which dome has not yet come up. Okay, now this fellow is contradicting. ये जो कजानी है वो contradict कर रहे जी, हैं. Okay, जी. sky white tents around them, vast canopies were raised, and the entire expanse was adorned with decorative carpets and assembly placed arranged that could accommodate 1,000 people. Okay, so he's saying, yeah, the foundation of whose dome has not yet come up from the sky. Then dome is not built, uh, and it's still half. The foundation is bunyan. He's talking. He's saying, well, agar, he's contradicting the first one. Here we see the platform of the tool. मतलब प्लेटफॉर्म पर है. अगर आप ताज में जाएगा तो ये जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, तीन स्टोरीज का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ताज बनाया गया है. ठीक है. और he's saying the platform is already built on which they built the tent. So उन्होंने टेंट लगा दिया, स्कैफोल्डिंग लगाया. देयर वुड हैव बीन स्कैफोल्डिंग. अगर ये जो प्लेटफॉर्म है स्कैफोल्डिंग होगा ना, क्योंकि आप उसके ऊपर समाधि बना रहे हैं, आप उसके ऊपर समाधि, पूरा समाधि बना रहे हैं, तो स्कैफोल्डिंग होता है, वायर्स होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होता है, फाउंडेशन होता है. It's really unkempt. I mean, you can't there. It's very dangerous to go there because it's all construction work going on. Yeah. Now, you cannot build a platform and then build a mausoleum after the foundation is built. It's all part of one extension. The foundation and the structures, the beams holding the mausoleum, एक ही structure है. आप नहीं बना सकते समाधि और उसके ऊपर बाद 2-3 साल के बाद आप दूसरे आपके ये जो डोम बना सकते हैं. आप नहीं कर सकते. ये पूरा एक एक्सटेंशन होता है. So the laying of the foundation includes the building of the structural beams of the mausoleum. This also contradicts the previous chronicler whose quotes say the mausoleum already existed. So एक बोल रहे हैं कि existed होता है, दो celebration हुआ उसके ऊपर, अभी ये तीसरा आया बोल रहा है नहीं, ये तो foundation सिर्फ foundation था. Here is another chronicler, अभी तीसरा है, वो contradict कर रहे हैं, फिर से contradict था, क्योंकि हमें बोला दिया गया कि ये जो मुगल लोग है बिल्कुल मेटिकुलस था, सब कुछ लिखा दिया, सब कुछ it's very very meticulous, but if you go to research their writings, it is such a mess, it is incredible a mess. So at the beginning of the 5th year of the exalted accession of the sublime edifice, which is situated overlooking the Jamuna River, following the adjacent north, and when the spade wielded with robust arms and hands, strong as steel, had with unceasing effort excavated down to the water table, the ingenious masons and architects of astonishing achievements most firmly built the foundation and mortar of the level of the ground. So here he's saying the 5वें साल, उसके मृत्यु के 5 साल के बाद उसका वो शुरुआत किया, वो समाधि को बना, वो एक्सकवेशन करने के लिए. उसने अभी 5 साल के बाद, अभी उन्होंने मतलब कि उन्होंने जो महल थे उन्होंने नीचे कर दिया, 5 साल के बाद उन्होंने शुरुआत किया सिर्फ एक्सकवेशन फाउंडेशन को रखने के लिए. पहला बोल रहा है नहीं, दूसरा बोल रहा है नहीं, शुरुआत था, ऑलरेडी था, तीसरा बोला वो सिर्फ समाधि था, चौथा बोल रहे नहीं, ये तो अभी शुरुआत हुआ 5 साल के बाद. ये तो बिल्कुल बकवास है, कंट्राडिक्शन. जी. हाँ. अभी यही बोल रहा है कि 17th in 1965 उसका मृत्यु हुआ 1962. लाहौरी एक ये जो कथाकार है, anniversary of the death of His Majesty the Queen in the manner of every year, the mausoleum of that enshrined in eternal mercy and Urs was held. Okay, so ये जो आदमी है लाहौरी जो है,
ये बोला है 5वें साल में exalted in after 1632. Okay, या they started excavation. अभी ये इधर बोल रहे हैं, ये जो आदमी है बोल रहे हैं the on in 1635, it means 4 years after her death, 4 साल उसकी मृत्यु के बाद anniversary है. In the manner of every year, the mausoleum of that enshrined eternal and whose assembly was held. So एक 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 चैप्टर पर लिखा कि वो 5 साल के बाद फाउंडेशन को इन एक्सकेवेट करे. अगले चैप्टर में वही आदमी जो लिख रहे हैं कि इन द मौजोलियम, द ये जो समाधि और उसके पूरा रौजा जो है वो बना गया और they had an assembly in it. So he's contradicting himself. Okay. Now here Lahori ये जो आदमी है says in so he says in 1632 foundation was laid or laying, and now he says it's you know it's already built. So he's contradicting. Here's another fellow Kazvini. Okay, he says that in 1635, the anniversary of the death, 4 साल उसके बाद, उसके मृत्यु के बाद, Her Majesty the Queen Mumtaz Zamani, an assembly was arranged according to the usual practice. Okay, in this illumined mausoleum of that one resting place in eternal paradise, to which were invited the pious writers in memories Quran, Hafiz, and the reciters of the formulas of God. Okay, so uh, again, this is another fellow who's saying ये जो 1635 में लिखा है कि हाँ ये मुमताज, the Majesty the Queen Mumtaz al Zamani, there was an assembly held for her anniversary, death anniversary. So again we see there's a contradiction. ये है अलग के आदमी है साही जो हमें use. He says in the 5th year, 5 साल के बाद, the foundations of the edifice, compared to which the solidity and height of the foundation of the 7 heavens are Shadab do not form even 1,000 part, was laid overlooking the Yamuna River, which flows in the north. At the bottom of its foundation, having been excavated down to the water, wonder-working masons raised its foundation in utmost strength, filling it with stone and mortar, and brought it up to the ground level. So again this other fellow is saying, well, in the 5th year now they're doing foundation. So शायद एक छोटा सा मकबरा, छोटा सा बिल्डिंग जो था सामने किया होता था, लेकिन असली जो ताज है, the main ताज, वो तो खड़ा हुआ था. Okay. Now in Lahori, ये जो पत्रकार है, he shows clearly that he had Turkish architecture in mind. The Turkish Ottomans, ये जो सुलेमान मंदिर है, मस्जिद है, उसका मन में ये था. And he says very clearly, which is highly polished and pure, made of that very stone, the wonderful inlay work of which will be presented, described with an entrance fashion of the jasper after Turkish fashion. Okay, joined with gilt fasteners, the cost of which is 10,000 rupees. So he's proving that he wants to use the Turkish fellows in this. So we know here it's all about the place. You have proof here that it is ये जो proof है हमारे पास कि उन्होंने लिखा हुआ है ऑफिशियल क्रॉनिक कथाकार के साथ कि 2 साल, 1.5 साल के बाद, 2.5 साल के बाद उन्होंने एनिवर्सरी किया और ये जो समाधि था पूरा हो गया, रौजा था पूरा हो गया था, और कॉन्ट्रडिक्शन भी है. So we've got both sides of the coin showing. And now we'll come to the completion of the tomb. So we've done the building of the tomb. Now we are going to the completion of the tomb. Okay. So again, you can pick and choose whatever completion date you want. No one knows. कांग्रेस ने बोला कि 20 साल लगा, उसको पता भी नहीं क्या 20 साल किस 20 साल वो कोई फॉरेनर था, फ्रेंच वाले था जो उन्होंने कथा लिखा है, उन्होंने बोला 20 साल, लेकिन असलियत जो है किसी को भी पता नहीं, क्योंकि it's very very different on every you know official chronicle. So official government says 22 years, sorry, not 20 years. The chronicler Sully, okay, he says in the space of 20 years, that building, Imarat jo hai, the foundation of which is the 8th wonder of the world and whose cap is the 10th roof of the world. But Sahi also contradicts his own statement. पहला बोल रहे 20 साल में खत्म किया,
And another page, he says 17th of Zikada, that means 1052 or 1643 in Christian calendar, the auspicious function of the death anniversary of Her Majesty Mumtaz al-Zamani was held in the illumined mausoleum of that holy quality. So he's saying 20 years over there, 20 साल पहले में बोल रहे हैं, बाद में 1643, that is 11 years after her death, ये बोल रहा है कि the death anniversary of her मैजेस्टी मुमताज ही जमानी, वो समाधि में किया हुआ है, पूरा समाधि में तैयार था वो किया हुआ है. सो ये क्या है कि उन्होंने ही इज कॉन्ट्रडिक्टिंग हिमसेल्फ. सो यू सी दैट देयर इज नो पर्टिकुलर डेट, बट द अर्लीस्ट जो कहावत है, जो लिखा हुआ है दीवार के ऊपर, जो कैलीग्राफी है, ये लिखा है. ओके, सो द अर्लीस्ट कैलीग्राफी जो खत्म हुआ है, जो दीवार जो खत्म हुआ है, जो मार्बल के ऊपर लिखा है, कैलीग्राफी शोज दैट द अपर मार्बल संगमरमर की दीवारें इन द संगमरमर. okay, in the domed hall were in place by 1635 1636. So he's talking, ये जो डोम है वो तैयार, उसके उन्हें कैलीग्राफी लिखा है और कैलीग्राफी का डेट लिखा है, तारीख लिखा है, तारीख है 1635 या 1636. On the tomb's interior south arch left end of the upper register सूरा लिखा है, सूरा 67, कुरान शरीफ के सूरा लिखा है, और ये 1635 1636 में लिखा. तो ये तो हो गया ना 4 साल बाद. inscription on the west grill door, so there's an inscription there, और लिखा है 1636 1637. ये तो 20 साल का नहीं है, तो ये तो 4-5 साल का है. Now there's another surah unsigned in surah 82, also on that door, signature of Ahmad Khan inside the tomb south arch, dated 1638 1639. So Ahmad Khan एक आदमी था जो उन्होंने signature लिखा हुआ है 1638 1639. And Amanat Khan in the interior tomb, south arch, bottom right side at the end of Surah 39, verses 53-54. There's another writing of his. Okay, and the last inscription on the inside tomb is 1647 1648. And there's a gateway inscription of the completion of the mausoleum. It's dated on the gateway 1647 1648. So आप देख सकते हैं कि अगर आप आखिर आपकी दीवार में कैलीग्राफी लिखना है तो मतलब दीवार खत्म हो गया. अगर दीवार खत्म नहीं है तो आप दीवार के ऊपर कुछ लिख नहीं सकते. तो शुरुआत होता है लिखने का 1635 से और खत्म होता है 1647. आखिरी जो लिखावट है 1647 1648. तो 20 साल भी नहीं हुआ, ये तब लिखा हुआ. और ये जो हमारे कांग्रेस वाले जो लिखा है, ये जो लाइसेंस राज है, उन्होंने लिखा है कि 22 years को लिखा है, 22 साल. So it is impossible to have completed the mausoleum or have commenced the calligraphy in 1635-36. That is 5 years, besides the fact that हिंदुस्तान में आप 12 महीने में सिर्फ 8 महीने काम कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीने के लिए बारिश है. और भूलना मत, ये उत्तर प्रदेश में है. उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बर्फ है, तो बर्फ जब मेल्ट हो जाता है, पूरा यमुना नदी और गंगा जो है, it swells up, it becomes bigger. So the whole area, the land around gets swollen, gets full with water. तो सब पानी है अप्रैल और मार्च के महीने में. तो ये तो स्वेल्ड, यू नो, द चिक्कट जो होता है, जो जमीन चिक्कट होता है, उसमें काम नहीं कर सकते, तो टाइम लगता है. तो हिंदुस्तान जब लोग बोलते हैं 12 महीने में आपने किया, 12 महीने से आपको 4-5 महीने निकालना है. ओके, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है. अभी इसके बाद हम जाएंगे आर्किटेक्ट पर. कौन है आर्किटेक्ट? ताज का आर्किटेक्ट कौन? सब लोग बोलते हैं मुझे पता है, हर मुल्ला बोलते हैं हाँ हमें पता है, विकिपीडिया पर जाओ बोलता है हमें पता है. लेकिन लाइक एवरीथिंग एल्स किसी को भी कुछ नहीं पता है. ओके, क्योंकि देयर इज ऑफिशियल नो आर्किटेक्ट मेंशन in the official chronicles. Emperor Shahjahan नामा में कुछ नहीं लिखा है. There's only circumstantial evidence, but no official name given by the court chronicles. It's very weird for an empire who is pontificating
literate and intellectual supremacy. बोलता है कि हम of the board of the caliphate, the caliph of al muminun, and they have no architect. ना मतलब आप समझ सकते हैं कि एक शायद एक मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन चार नहीं. और ये सब लोग ने एम्परर शाहजहां and his officials would have verified it. Okay, so let's start with, शुरुआत करते हैं हम उस्ताद अहमद. उसका नाम आता है अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट की द दीवान ई मुहंदिस of his second son लुत्फ अल्लाह ने लिखा है. और ये किताब है और ये लिखा हुआ है दीवानी मुहंदिस, उसका नाम आता है. उसके क्लेम है कि उसके फादर ने बिल्ड किया ताजमहल और रेड फोर्ट दिल्ली में, शाहजहानाबाद फोर्ट. He worked with his other architect during Shah Jahan's reign. Okay. Ustad Hamid, उसने काम किया Ustad Hamid के साथ. Neither are in the official chronicles of the Taj Mahal. However, the chronicles of Ustad Ahmed's death said that he died in 1649, before the Taj was finished, as noted by the Indian government. So वो मर गया, वो कैसा खत्म. Okay, so ये सिर्फ two official notes of supervisors in the construction. ये जो official जो लिखावत है, नामा है उसका, सिर्फ दो official notes है. Makarat Khan, and he is given the title given to Mullah Murshid Shiraj, who came to India during the era of Emperor Jahangir. He rose up the ranks and he is said to have been in charge of the Shahjahanabad fort. He died in 1648. So he's the supervisor of the fort, okay? And he's also the supervisor of the Taj Mahal. He can't do both at the same time. The second one is Mir Abd al Karim, in charge of the Lahore fort. He was transferred to Agra in 1632 as a superintendent of the building Daroga-e-Imarat. He was at this point in his post. He was at this posting until his transfer in 1649. ये जो आदमी है, ये जो लाहौर की फोर्ट का था, he was transferred to Agra in 1632 until 1649. But he is the only two names, and he is not given the name of architect. Okay. Okay, both the two architects, building supervisors, are noted as supervisors of construction. लिखा हुआ है कि supervisor, okay, architect नहीं लिखा है. The official फारसी में ये जो architect है शब्द है, उसका शब्द है मिमर. कहाँ भी नहीं लिखा है कि मिमर. Okay, you have to understand that, very important. So the foundation of the Taj is supposedly built using architecture called by modern Islam Hush Bisht architecture. 8-sided floor plan using so-called Persian engineering and architecture. Again, Persian फारसी का engineering Islamic नहीं है. Persian existed way before Islam. मैंने आपको बोला था पहले में कि ये जो फारसी के राज साम्राज्य है, उन्होंने गंधारा को कब्जा किया. Okay? गंधारा को कब्जा किया. गंधारा हिंदुस्तान का पार्ट था. और उन्होंने हमारी ये जो संस्कृति लेके उन्होंने बना दिया फारसी. कोई बात नहीं, वो टाइम में सब कुछ एक्सचेंज होता था, प्रॉब्लम नहीं है इसका. लेकिन जब आप बोलते हैं कि ये इस्लामिक है, इस्लामिक तो कुछ नहीं है इसकी. Islam says it represents 8 levels of paradise for Muslims. Actually, it's just rhetoric which was rebranded from the traditions and culture of the previous civilizations. The land we have come to know as Persia was part of the Vedic belt. जो वैदिक बेल्ट है, जो मोरक्को से कोरिया तक एक सब वैदिक बेल्ट. तो पर्शिया भी उस वैदिक बेल्ट का एक हिस्सा था. Okay, the region broke up into both छोटा kingdom और राज्य और साम्राज्य, and they forgot कि एक बार एक दिन जो था वो एक ही का था. The 8-sided architecture has to do with the 4 cardinal directions. So ये जो 8 side का architecture ना, 8 तरफ के, ये कहाँ से आता है? It has to do with 4 cardinal directions and 4 sub directions at every junction. Just so इजिप्ट का पिरामिड होता है, ये 4 डायरेक्शन होता है, 4 की तरफ, और हर तरफ, हर साइड का आधा होता है. So sub directions.
and that makes up our electromagnetic field. It is replica of the magnetic field of the cosmos. Okay, this architecture has been used for architecture in Vedic temples, Hindu temples. It's used in mandala patterns. It's also used in the Angkor Wat Vedic temple architecture. Okay, it is clearly been in use with the Taj, लेकिन like the game of chess, जो chess खेला जाता है वो तो Indian subcontinent, हिंदुस्तानी का subcontinent से आता है, और chess is played on a checkered game board with 64 squares arranged on an 8 to 8 grid. Similarly, Hindu architecture descended from our Vedic architecture shows 8 sides. So हमारे जो Vedic का architecture है, जो Hindu का architecture, वो भी मंडला पैटर्न से होता है, और वो भी 8 by 8. Okay, हमें पता है कि ये जो है ये असली है. So that is where we get that. Now, so we come to the conclusion that there is no real architect for the Taj. Okay, जो लिखा हुआ था किसी ने लिखा लेकिन कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किया. तो इसके बाद हम लोग कॉस्ट पर जाएंगे. तो कॉस्ट हमने सब कुछ देखा अभी तक. कॉस्ट क्या है? That is important part of the research. Okay. Yeah. So regarding the cost, 3 of the official chroniclers gave the different estimates of how much it would cost. Kazavimi gives an estimate of 20 lakhs. Lahori says 40 lakhs. Sali says 50 lakh. So, Everybody is contradicting. so Yeah. why is it so difficult for the official chronicles to state the cost of the construction? Did Shah Jahan verify it or what? उन्होंने verify किया कि क्या? या हर एक का दूसरा estimate है. एक भी नहीं है. जो it's the same. At the same time, Emperor Shah Jahan undertook the construction of Shahjahanabad Fort. तो वही टाइम जो ताज महल बना रहे थे वो तो शाहजहानाबाद के फोर्ट बना रहे थे. इतना पैसा कहाँ से आया? ओके, इट इज अ लॉट ऑफ मनी. मैंने आपको बोला कि पहले में कि ये जो डिफेंस में हमारा आधा बजट जाता है, ये तो ठीक है. हाँ, तो डिफेंस के बाद हमें पता है कि मुगल साम्राज्य जो है वो तो हिंसा में लगा हुआ था पहले से. ऊपर से जब आया था आखिरी दिन तक वो तो औरंगजेब के मृत्यु के समय तक वो तो हिंसा में ही चले जाएगा. वो तो इतना वॉर था, इसमें इतना वायलेंस था. तो इसका डिफेंस का बजट तो ऊपर ही था. उसके ऊपर उसको जीना था, उसको पैसा देना था औरत लोगों उसके. ये तो सीधा ड्रग एडिक्ट था, बिल्कुल ड्रग एडिक्ट था. They are very big drug addicts, the Mughal emperors. And उसको ड्रग के हैबिट था, उसका औरतों के सेक्स का हैबिट था, उसको खाना पीना, और इसके ऊपर उन्होंने डो किया. And so at the same time he is making the Shahjahanabad fort. उसका जो पैसा था 60 lakh, 7 lakh लगा हुआ है. So it's very rare for an emperor to put down so much of money for architectural purposes. This military operation took a major part of the ruler's budget even 400 years ago. Did he really build it? So now that we've seen all of this, we've got an idea. हमें idea मिल गया. Yeah. We're just going to see where does all this information leave us? कहाँ भी नहीं. Besides that, there are details that do not fit the Taj Mahal. So we are as lost as now as we were before. We see that actual official documents do not show us any conclusive thing. On the contrary, it gives us proof that this mahal पहले से ही था और उन्होंने बना दिया पहले से, और इसलिए सब लोग को पता ही नहीं क्या लिखना है, क्योंकि उनको जो पहले ही से ही था वो नहीं बोल सकते कि कितना पैसा गया, कौन सुपर आर्किटेक्ट था. अगर असलियत उन्होंने बना दिया तो पूरा लिखा हुआ था. Okay, so we'll go to some descriptions of the Taj, okay, that show very clearly that there's a problem. Okay, so पूरा का chronicles जो है बोलते हैं Taj is a marble monument, लेकिन असलियत नहीं है. Taj is a red sandstone monument. If you get a chance to see an aerial view, you will see the surrounding monuments are made up of red sandstone. Even जो रूफ है, ताज का रूफ है, वो भी रेड सैंडस्टोन का है.
It is no different from Shah Jahan's great grandfather's tomb, Humayun's Maqbara. The original emperor who built this tomb probably built it as a sandstone monument. Okay. um, and then other emperors later in the era, they would have added a marble on the top. Okay. Like the casing stone, जो गीजा में जो है, उसका casing stone जो होता है बार का, Hmm. और वो casing stone अभी गिर गया, ऐसे ही casing stone है marble के बाद, लेकिन ये भी marble शाहजहां ने नहीं किया. Nowhere in the chronicles does Shah Jahan talk about acquiring sandstone for the raw material. Neither does he put marble on it. Because the artwork on it is very Hindic. It's not Islamic. So we know that he hasn't put marble. Even adding the marble takes time. It could not be ready for 1636 for calligraphy. जो लिखावट हुआ calligraphy जो लिखा है, वो 1636 के लिए तैयार नहीं था. Okay, so you can't. 1632 में मर गया, अब 1632 में ये उन्होंने लिखा हुआ है, नहीं हो सकता. Like I said, लेकिन और ये जो अलावा जो लिखावट हुआ है, it is all Hindu design. So we go to point number 2. The topmost balcony, ये जो balcony है topmost ऊपर Yeah. का, okay, that's their designs of snakes facing each other. Islam does not allow monuments as part of their art and architecture, especially on an architecture to do with religion or deen, as they call it. So this is a very holy monument because she is the lady of the land, the queen of the land, and now this is, it's called the abode of the caliphate. How can you have, animals on it? Yes. Okay. Now, point number 3, there are 2 buildings on either side of the Taj were built, on each on the east as a mosque and the west as guest quarters, as per official chronicles. Okay, aaj ke chronicles, well, official chronicle. Why are the minarets of the mausoleum not mosque? Why are the chronicles mention that one on the west as having been used as guest quarters? It does not make any sense. ये जो समाधि जो है, you want to give guest quarters, ये तो समाधि है, ये तो होटल Hmm. नहीं है. हाँ? और उसके Hmm. ऊपर भी जो आगरा फोर्ट है, इट्स 2 किलोमीटर अवे. आगरा फोर्ट ताज से 2 किलोमीटर दूर है. तो Hmm. अगर आपको गेस्ट को लाना है, वो देख सकते हैं आपके समाधि, लेकिन वो आगरा फोर्ट के अच्छे तरह से उनको बिठा सकते हैं. ये गेस्ट क्वार्टर्स क्यों बनाए हैं? ओके. सो इट्स अ फोर्थ वन. ये जो मॉडर्न इंडियन इस्लामिक एस्टेब्लिशमेंट जो है, says the monument to the west of the Taj is a music hall, contradicting the official chronicles. So the official जो chronicle कहावत है, पत्रकार जो है, उन्होंने लिखा है कि ये जो गेस्ट क्वार्टर्स है, आजकल के मुल्ला टुल्ला जो बोलता है, ये बोलता है कि इट इज म्यूजिक हॉल. अरे म्यूजिक हॉल कहाँ से आया? अभी पहले तो गेस्ट हाउस है, अभी तो म्यूजिक हॉल बन गया. Hmm. तो Hmm. समझ लीजिए कि आपको म्यूजिक हॉल क्यों चाहिए समाधि के साथ में? Hmm. ये तो समाधि है, ये कब्रिस्तान है किसी का, और 2 आदमी का कब्रिस्तान, और बहुत सारी ये जो उनके उनके ये जो लेडीज इन वेटिंग सब कुछ वो भी उधर है. ओके. Hmm. साइड में. तो आपको म्यूजिक हॉल चाहिए कब्रिस्तान के सामने? Hmm. Okay, the story does not match. Only Vedic monuments have music halls, as Vedic mantras are sung at the dawn, at the break of dawn and sunset, to pay homage or to align with the change of the dawn and dusk, to be considered, because we are, the cosmos is an electromagnetic field. The creator jo brahma jo hai, it's a creator, it's an electromagnetic creator. So you rise with the creator and you set with the creator. You have to align to the angle, the axis of the planet of the creator. And that's why singing is an externalization balance of your energy field आपकी जो, और मंत्रा जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है उसका. और व्हेन यू सिंग यू आर बैलेंसिंग, ओम ओम करते हैं, ये you're balancing your electromagnetic field, and that's why one for the sunrise and one for the sunset. So this is a Vedic one. Yeah. Panchvi. Okay, the Taj does not face Makkah.
It is built on the north south axis. Are you telling me that they Hmm. did not know astronomical directions building after building a monument like Taj? उनको पता Hmm. नहीं था. अभी शायद आप बोल सकते हैं कि पांचवी 6th सेंचुरी में पता नहीं, 7th सेंचुरी में पता नहीं, 8th सेंचुरी. अभी ये तो 1635 1630 उसको पता नहीं था. छवि point. The real entrance to the mausoleum was to the north, उत्तर में था, where the royalty came by boat. बोट से आते थे. It was not on the south like the modern day entrance. The royals arrived at the Taj by boat on the Yamuna River. ये लोग को पता नहीं है, शायद किसी को पता है, लेकिन शाही जो एंट्रेंस था वो तो उत्तर से था, वो जो यमुना नदी से आते थे. अम, In the अ, boat. हाँ, बोट के साथ. अभी 7वीं. The emperor and his wife have 2 sets of graves each. 2 sets of grave. Okay, जब आप ताज में जाएगा, अगर आप ताज में गए, वो तो Hmm. ऊपर जाके ही 2 sets of graves हैं. The the set of the centaur on the main floor, which is in reality the fourth floor. ये तो जो चौथी फ्लोर पे है हाँ, जी. चौथी फ्लोर का है, जो लोग देखते हैं वो चौथी फ्लोर पर. As the Hmm. Taj is a 7-story building, there exists a second set of graves. ये तो this is not a real grave. जो असली grave है, कब्रिस्तान है, खबर वो है. जो नीचे है, कब्र है, Hmm. second and third floor. Okay. um, जब मैं ताज गई 80s में, I think it was the only thing about the mausoleum that struck me. Hmm. Why would someone want 2 sets of graves? Now, in the Islamic world, at least that I know of, there's nowhere that they have 2 sets of graves. Okay, कहाँ भी नहीं. Back in the day, they let you go down to the second set. जब 80s में था, 90s में था, आप नीचे जा सकते थे. Yes. लेकिन आज तो they have sealed it off. It is a dingy room. And I have recall, and Yeah. if I recall correctly, वो तो खिड़की भी नहीं था उसके, जो Hmm. कब्र है नीचे, सेकंड और थर्ड फ्लोर, खिड़की भी नहीं है. एंड इट Hmm. वाज स्मेलिंग ऑफ यूरिन. इन लोग तो Hmm. हमें पता है कि हमारे देसी लोग कैसे यूरिनेट करते हैं. और it was such so smelling so bad. There was nothing special about the graves. So an important note over here is that if you want to bury a dead body in the ground, you have to go right to the dirt. That Yeah. means the below the basement, as the underground, उसके नीचे भी ये जो कब्र है, उसके नीचे भी कमरे हैं. So the floor of the second set of graves was not the real basement. So one set of graves on the visitors floor, दूसरे set in the dingy floor below. Remember, the Taj is built on stilts as a foundation. So on top of the foundation is a slab, which you would have had those some 1-story platform, on top of which is a 1 or 2-story marble platform, on top of which you have the mausoleum. So burying anything in the ground would mean breaking the slab in the foundation, unless of course the royal couple is not buried in the ground at all, but they're buried in Hmm. the crypt. So crypt में है, लेकिन वो जमीन में नहीं है. Okay. नहीं करना. Hmm. Okay. Now, if there are 2 sets, unless, so the other option is there are 2 sets of fake graves. It could explain why Shah Jahan did not Hmm. accompany his wife's body from Burhanpur, where she died and was temporarily buried. तो वो बुरहानपुर में मर गया, गुजर गया. अगर ये दोनों सेट, ये कबर जो है, दोनों सेट कबर का वो फेक है, असलियत नहीं है. So you can you can think why शाहजहां जब गई थी, शाहजहां ने जहां उन्होंने बोला कि उनके मुमताज की बॉडी को इधर आगरा में लाना है, उसने नहीं Hmm. गए उसके साथ, उसने उन्होंने बेटा को भेज दिया. So she was brought to Agra and accompanied by Prince Sultan Shah Suhaja Bahadur, Ummadat ul Muluk Wazir Khan, and his wife's lady in waiting, Rabia Sati Khan. Okay, a body can take up to 12 months to decompose. Okay, Hmm. or Hmm. less. So she's not even fully decomposed. शायद वो fully decomposed है, शायद नहीं. Okay, depending on the environmental conditions. Now, did Shah Jahan unearth a semi decomposed body and rebury it in Agra after 6 months? What Hmm. was his hurry? Why did he not wait? What exactly did he bring from the original resting place in Burhanpur?
I think Hmm. it's Madhya Pradesh, I'm not sure, Uttar Pradesh. If he bought anything from the mausoleum in 6 months, then it means the mansion was already standing. अगर वो लाया था, हाँ, Hmm. नहीं बनाया, तो मतलब है कि ये जो समाधि जो है खड़ा हुआ था, जब जो वो फादर Already. डीड में ऑलरेडी खड़ा हुआ था, इसलिए Hmm. जो तैयार था वो उसने लाया और उसके समाधि में डाला. The main floor, 10 point. The main floor, as I mentioned, houses two centerpieces for public viewing, that of Shah Jahan and his wife Mumtaz Mahal. Take a closer look and you will see the grave of Mumtaz Mahal in the dead center. तो आप जाइए ताज महल में, सीधा सेंटर में पहला माला पर जब आप अंदर जाएंगे, वो मुमताज महल का कब्र जो है सीधा सेंटर में होता है. ओके, इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अ सिमेट्रिक डिजाइन. तो एक Hmm. डिजाइन है उसके ऊपर और ये जो उसका कब्र है. ओके, नाउ in it is west of the center place of Mumtaz Mahal. So no, Shah Jahan जो है, लेकिन Shah Jahan की कब्र जो है spoils the symmetry of the main floor. It is built on top of the existing design. ये जो थोड़ा साइड में वेस्ट में है थोड़ा, और it's sitting on top of a design already designed, so it's cutting a symmetry design there. So जब बना दिया, अगर वो बनाया तो सही है, तो ताज को बना दिया, उसको पता नहीं था कि वो शाहजहां मरने वाले हैं एक दिन. और उसका तो कवर होगा वहां पर जी. उसका, हाँ, तो उन्होंने सेंटर क्यों नहीं अलग अलग किया, या उन्होंने क्यों जगह नहीं रखा शाहजहां के लिए, ऐसे ही Hmm. बना दिया और उसके सेंटर की सिमेट्रिक डिजाइन को तोड़ के उन्होंने उसके ऊपर डाला. ये तो पागलपन नहीं है. Hmm. So they knew it. Okay, so this is point number 10. Point number 11. Now, if you look at the Gwalior fort in Rajasthan, it's built in 680. Layers were added of by successive empires. जो हर राज्य आया है उसको उन्होंने लेयर कर दिया, जैसे हमारा um, like a tree, you have layers and rings and rings. So every king comes and puts a layer of. The present outer structure, located at the northeast side of the fort, or the Man Mandir place, was built in 1486 and 1516 by the Tomar ruler Man Singh Tomar. Once inside the royal audience room, you will see a gallery where the women sit on top of the gallery and the kings would be below. The railing of that gallery closely matches the railing around centerpiece of the Emperor Shah Jahan and Queen Mumtaz Mahal. This is very clearly Hindic art. Okay, the Amber Fort architecture built prior to the Taj was owned by the family of Raja Jai Singh, who also owned the Taj. ये दोनों मॉन्यूमेंट दो है जो है Hmm. सेम Hmm. आर्किटेक्चर में है. Hmm. Okay? The architecture of the Taj is really Rajput architecture mixed with previous जो हिंदी का डिजाइन है previous सदी का, और Rajput kings जो गुप्ता मौर्य empire से descended है. So they have got the Gupta Maurya architecture art, और उन्होंने ये जो है अभी ये जो बना दिया है, ये जो the fort and fortress, और यही डिजाइन से ये तो ताज को बना दिया. और मौर्य एम्पायर थर्ड फोर्थ सेंचुरी में था. मैंने बोला आपको कि ये जो ताज है थर्ड फोर्थ सेंचुरी से बना, फिफ्थ सेंचुरी के पहले बना दिया. ओके, जी. ऑन दिस नोट आई वांट टू शो यू समथिंग. ये जो मेरा फेसबुक का पेज है, एक मिनट, आप मेरा फेसबुक के पेज को देख सकते हैं. कैन यू No, सी? no, I can't see it. No, I can't see it. Okay, hold on. Okay, just going to show you something. Yeah. Arrêtez de partage. I'm going to show you something on my Facebook page. Very important. Partager l'écran. Facebook. Can you see? आप देख सकते हैं अभी? Yeah. 1 second. I'll just hold on. Yes. 1 second. I'll just add it to stream. Yeah. I'm going to read you something. Okay. I'm going to show you something else before I go to that screen. The Hmm. railings around the royal centerpiece of the main floor are decorative patterns with Vedic liturgy or Hindu rituals called kalash or kalasha. It Hmm. resembles a metal pot, usually made of copper and flat round holes. It is kept at a Vedic ritual altar. It is symbol of abundance and prosperity. There are 108 decorative pots on the railing.
The number is 108, is very significant in Vedic sciences. One of the most important significance, um, of one of the most important, among others, is that our bodies are made out of 72,000 nadis, 72,000 nadis there, or 114 chakras, out of mm, which two nadis are out of the body, four we cannot control. So 108. Knowing these channels of energy and pathways, nadis and chakras, is distribution, balance, flows, leads up to a balance in the human being, which will lead to peace and prosperity. And this I got from Nitin Shukla and Amit Ray. So it's very important to understand that. So this is Kalash जो है वो बिल्कुल हिंदू आर्ट का है. अभी आप मैं आपको कुछ बता रही हूँ. Okay, you see my mm, Facebook page, ये जो है लिखा हुआ है अरबी mm, में mm, सूरा है. Okay, और ये correct. देखो उसके आर्ट, और ये देखो हिंदू का आर्ट सामने, ये जो Mm, फूल है हिंदू आर्ट. ओके, नाउ द अरबी जो आर्ट है, कैलीग्राफी है, लिखावत है सूरा का, mm, कुरान है, वो बहुत अग्रेसिव और harsh और coercive और degree, it's very insulting. Okay, it's very harsh and corrosive. Now compare this to the artwork and floral work of the Hindu designs on the Taj. Now take a look at any Ottoman calligraphy. It is the same aggressive calligraphy. ये जो mm, मैच होता है ऑटोमन के कैलीग्राफी और ये मुगल का कैलीग्राफी, क्योंकि ये वही खानदान के हैं, यही जेंगिस खान सेंट्रल एशियन का है, ये जो बहुत हिंसा है उसके दीन और उसके आत्मा में, ये जो mm, बहुत कजिन है. Their only heritage is a spiral of thousands of years of violent vendettas. Their art and literature was an expression and of their seismometer of their violent energy. जब हम लिखते हैं, हमारे जो mm, लिखावत है, हमारे अंदर के आत्मा की तरफ से लिखता है. जो लिखता हुआ, अगर हम we are very traumatized, you will see our writing is all shaking about the place. If we are mm, very peaceful, you'll see our writing very peaceful, you'll see the space, सब कुछ है. But if we are traumatized, look at someone who's traumatized, someone who's hurt, someone who's injured, and ask them to write something. You will see that it's very, very aggressive and corrosive. So you see this over here. Okay, you see the Hindu art. There is all of this is space. There's space mm, between each other. There's artwork. There's design. और ये जो अरबी कैलीग्राफी है, ये तो mm, बहुत करोसिव है. एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक के साइड में एक के ऊपर नीचे. It's very aggressive. It doesn't show you any art. There is no art in this. ये तो असली अरबी नहीं है, ये तो सेंट्रल एशिया का अरबी है. अभी ये mm, देखिए, ये भी सेंट्रल एशिया का अरबी है. ये देखिए, ये बहुत अलग है. ये two different. One mm, is very artistic, and you can see the difference, and this does not match the same era. Now when we write, we always write or do artwork of the same era. You see, we हम लोग building करे, we're all building skyscrapers. The whole planet is building skyscrapers because this is the mentality of its time. Okay, so similarly, but when we have different architecture, it's telling you that we are from a different time. So when they do archaeology, they will say, oh, this is from this era, this is from that era, because a writing and artwork bolte hai ki which era it comes from. So you can mm, see the era over here. You can see this Hindu art is from a completely different era, and if you see the Arabic writing, it is from a completely different era. It is so aggressive and aggressive and insulting to a point. But if you go to the original, look at this. This is the um, close up of the surah. Sorry, just going no, back. that's your interesting, yeah. Just 1 minute here. माफ कीजिए मुझे. Sorry. Just give me here. Okay, so this is the Hindu art here. You can see the Mm, space everywhere. mm, There's space. Okay, this mm, is the Arabic art. This is the Arabic art, not Arabic. ये तो or Central Asian Turkic art. You look at mm, this at the side. So it's so aggressive and disgusting. mm, Look at this. It doesn't match at all. See this? mm, Now, if you take this same surah, okay, ये जो mm, surah लिया,
and you Hmm. go to the original Arabic calligraphy, because हम समझते हैं कि ये जो अरबी है जो हम पढ़ते हैं कुरान शरीफ में ये Hmm. अरबी है, Hmm. ये अरबी नहीं है, ये तो ऑटोमन का अरबी है, क्योंकि ऑटोमन ने कब्जा किया पूरा अरबी को, और इसलिए क्योंकि कब्जा किया इसलिए उसका अरबी जो है अभी बन गया अरबी अरब का अरबी। लेकिन ये असलियत अरब का अरबी नहीं है, असलियत अरबी का है। मैं बताती हूँ आपको, I will show you. So these are the old Qurans. Okay, you see, Hmm. it comes only after, comes after the 10th century, after the Seljuk Turks. Seljuk Turks. All of this is after the Seljuk Turks invasions. Now I will Hmm. show you Asli Kufic Arabic from Iraq, Baghdad. Look, we start here. You see the space? Hmm. Bada space hai isme. Okay, Hmm. there is no over and under in between. See, there's space they've got, and what they are telling you, these people, when you see space, that means these Hmm. people are very calm. हमें इतिहास ने, तारीख ने बता दिया कि ये अरबी लोग बहुत कमीने साले लोग हैं, असलियत Hmm. में नहीं है, क्योंकि आपकी जो लिखावत है बता देते कि आप है कौन। अगर आप शांति से लिखता है, क्या आपका लिखावट भी शांति से होता है, तो जब स्पेस होता है मतलब कि आपका बड़ा यू हैव Yeah. रिस्पेक्ट, यू Hmm. हैव स्पेस। Hmm. तो ये जो लोग हैं ये तो बड़ा रिस्पेक्ट वाले हैं, उन्होंने नहीं किया ये जो rubbish. Look at this. There's space. It's not all that great, but look at the space. This is Yeah. original Arabic from the Arabic time. This is also coming along the Seljuk Turks. It's already starting. See, this is before the Seljuk Turks came. Hmm. This is Kufik. This is what you call Kufik. This is not Kufik. This is not Kufik. I'll show you something. Look at this. This is Kufik. Okay, it's Hmm. absolutely beautiful. Hmm. Now, you might not understand. मैं तो अरबी नहीं पढ़ती हूँ, okay? Hmm. लेकिन from the art, you can tell the person and you can match the era. Now, look at this and think of what I showed you, the Hindu art. This comes from the same era of the Hindu art. This is 3rd, 4th century, okay? Hmm. And the Hindu art on the Taj is also 3rd, 4th century. It matches very, very clearly. Now, अगर शाहजहां ने असलियत में Hmm. किया, अगर उसने असलियत लिखा हुआ है, सूरा, ये जो सूरा लिखा है, he would have used, if he used the Kufic script, you would not have seen the difference. Hmm. उसने Kufic script इस्तेमाल नहीं किया, उसने Ottoman script किया, क्योंकि he was a rival of the Ottomans. He wanted to show the Ottomans he was superseding them. So he used the Hmm. Ottoman script, and it shows Yeah. you perfect mismatch that this writing does not match the original artwork of the Taj. And you see, this is the uh, Junagadh Fort. I'm showing you the Junagadh Fort here. This is Hmm. also on my Facebook page, Religions, Regimes, and Refugees. Look at the art in the Junagadh Fort. It was built before before Shah Jahan built. Yeah. You see, it's the same art. This is a Hindu Yeah. fort. It's the Yeah. same art. Same. Yeah. Okay, this is the same art. So Yeah. how did this art, which was built before, go on the Taj Mahal? Because the art on the Taj Mahal, it was existing before. This was owned by the same family, the Rajputs, not the Yes. same family, but the Rajputs. Compared to yeah, so you have proof here that the artwork is Hindu art. We think, oh, ये तो शाही आर्ट है, मुगलों का आर्ट है। ये तो मुगलों का आर्ट नहीं है, ये तो राजपूत के आर्ट है। उसके पहले राजपूत लोग आते हैं मौर्यन का एम्पायर से। ये तो जो Yes. मौर्य के एम्पायर था वो टूट गया है, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम बन गया, राज्य बन गया, और ये था राजपूत लोग। और बहुत सारे राजपूत लोग ने मुगल लोग के साथ they put an alliance, and that's why the Mughal was so successful, because they were in alliance with the locals. उन्होंने हमें बेच डाला। खैर कोई बात नहीं, like just to tell you, this is not Hmm. Mughal art. So I'm just going to go back to my writing. If you could share my Hmm. page, just won't be long now. It'll pretty much hold on. Partager. I can't see your page. Yeah, You'll I've have just to. Yeah, you'll there. have to add it so that I can add it. Yeah. Yes. Okay. Here we go. Yeah. 1 second. Oh, sorry. Yeah. I think. Yeah. Okay. So you can see. आप देख सकते हैं? आप देख सकते हैं? It's written. Yeah. Huh. Okay. So point number 13.
if the that is the last other point. Now new point, if the official अगर official जो लिखावट है government literature, Taj was completed in 1653 क्योंकि ये जो कांग्रेस के लिखा हुआ उसने बोला 22 साल, so 1653. 1652 में औरंगजेब ने बोला कि रिपेयर्स करना है उसके ऊपर. Now if the Taj was not yet completed, अगर ताज Then 1652 how में did कंप्लीट, yeah, he would then not how have to did tell it his father कि हाँ एम्प्रेस शाहजहां, हाँ ये तो खराब हो गया है, आपको repair क्या करना करना है? है. तो सीधा जाके सुपरवाइजर या आर्किटेक्ट को बोल सकते हैं, भाई साहब देखो ये तो पानी गिर रहा है, अभी ठीक कर लीजिए, पहले से बाप आने के पहले ठीक कर लीजिए. उसने बाप को लिखा है छिटियारी, ये क्या है. सो it's a proof that it was already built. Okay, so we go there to the next one. The Taj, सब लोग को पता है कि लोग बोलते हैं कि 22 rooms below the main floor, possibly more. The government denies it, but there's no way to reply to verify it. The 16th point is the Taj shows a Vedic Om. I showed you the symbols of the art, the art form. Vedic Om symbols are repeated on the art. The phonetic components of Om are an algorithmic frequency that is used while chanting mantras for meditation to balance Okay. out your electromagnetic field. So it is very clearly telling you something that जो लोग हमें कुफर बोलते हैं, Hmm. वो ओम का ये जो शब्द नहीं लिखने वाले. हाँ ठीक Hmm. है, उन्होंने अलायंस किया, समझ लीजिए कि वो राजपूत के साथ अलायंस किया, लेकिन Hmm. राजपूत की जो दीन और धर्म है उसके ऊपर नहीं डालने वाले, क्योंकि ये लोग तो Hmm. सुप्रेमिस्ट है. ये लोग तो बोलते हैं कि हम सबसे खास, सबसे ज्यादा, सबसे ताकतवर दीन है, तो आप दूसरे को कुफर का दीन क्यों लगा रहे हैं इसके ऊपर. Hmm. So 17.1 is the structure of the main mausoleum is supposedly a mosque. But as mentioned previously, it has no minarets. So minarets kahan gaye? Minarets are on the main monument, which does not make any sense. A minaret is normally attached to a mosque. Besides, Yes. ये जो So, minaret yeah. है 43.2 centimeters tall है. Shouting from a minaret, अगर आप चिल्लाने वाले हैं आजान, तो जो Azan. मुजेन जो है, जो आजान को चिल्लाने वाले हैं, देने वाले, जो लोग नीचे बैठे हैं वो सुन सकते हैं. समझ लीजिए वो सुन नहीं सकता है, वो 5 बार जाना पड़ेगा. ठीक है, 2 मुज़ेन मुल्ला होने वाला है, 3 मुल्ला, फिर भी ये जो 43 मीटर्स टॉल, उसने वो नहीं चला सकते, इतना कोई सुनने वाले नहीं है नीचे. तो सही मिनरेट बात. जो है अरबी का शब्द से आता है, मतलब अरबी का शब्द है मनारा. मनारा का मतलब लाइट और लाइट हाउस. वो जो अरबी का शब्द से आता है नूर, नूर का मतलब लाइट. ओके, Yeah. इनिशियली असलियत जो जब इस्लाम शुरुआत हुआ, उसका मिनरेट नहीं था इस्लाम में. Hmm. सिमिलर टू क्रिश्चियनिटी, वो जो बेल वेल होता है ना, ये तो घंटी बजाते, क्रिश्चियनिटी में कुछ नहीं था, ये तो रोमन सरकार के था. After Islam started colonizing the Middle East, a region that was partially run under the Roman and the Byzantine Empire, they started taking over the monuments. तो उन्होंने monuments को कब्जा किया और उसके रोमन का monuments को इस्तेमाल किया. और ये रोमन का, byzantine का monuments के ऊपर था, उसने रीब्रांड किया और उन्होंने बनाया मिनरेट. ओके, Hmm. Hmm. और ये जो मिनरेट है, ये जो लाइट हाउस थे, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आप देख सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं कि पूरे ये जो फोर्ट है रोमन का, जो भी कहाँ है, पिरामिड, हर किसी फोर्ट, हर किसी पिरामिड या मंदिर जो है, एक नदी के ऊपर बना है. इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ On रिवर. banks of river. Yeah. सो ये जो लोग आते थे रिवर से आते थे और उसको वो देख नहीं सकते. वो जो मिनरेट था, वो लाइट, वो आग लगा था उधर, तो लाइट हाउस था, Light. ताकि लोग जो आते थे वो देख सकते वो कहाँ जा रहे हैं. ठीक है. So, Okay. similarly, on the Indian subcontinent, all ancient architecture was based on the astronomical mathematical science. The Mughals, उन्होंने यही किया, रीब्रांड किया हमारे मॉन्यूमेंट को और मिनरेट को स्पिरिचुअली बना दिया. और was it really light or electrical energy that the minarets of the Taj were supposed to dispense? Because they are not anything to do with Islam. Okay.
Now, the concept of mahal in Mughal times was considered as revenue units. मैंने आपको बता दिया कि mahal महालिया है, संस्कृत के शब्द है जो revenue unit से आता है, कि जो भी महालिया था उसके बार जो है वो बाजार थे और हम्म पैसा कमाती थी. The concept of mahal was applied to certain specified revenue posts. जब सबका सब बाजार नहीं था, स्पेसिफिक रेवेन्यू, स्पेसिफिक बाजार जो थे, जो ports of markets are. There were ports where the boats came and things हम्म like that. Okay, yeah, and this is from the Shirin Musvi, the economy of the Taj Mahal of Mughal Empire. So she is the one who's saying this, that the revenue streams such as ports were used as mahal. The real tombs of the royal crypt lie below. Very very important. 20th point, ये जो कबर है, असलियत कबर जो बोला गया गया है कि हम्म शाहजहां और उसकी बीबी मुमताज महल की जो कबर है नीचे है. Now, on the crypt, okay, if you look at it, go into my Facebook page, Religions, Regimes, and Refugees, and you go on the pictures, and you will see there are 99. उसकी कबर पर 99 अल्लाह के 99 names को carved किया गया है, तो inscription तक लिखावट है. Okay, हम्म to Islam, 99 names of Allah is an amalgamation of names taken from different verses of the Quran or Hadith. yeah, हमें पता है, okay? हम्म It was made into a philosophy given to their congregations to repeat over and over. So हमें पता है कि मुसलमान लोग जो हैं ये जो इस्तेमाल करके 99 names of Allah को उसको we repeat and repeat and repeat. It is made into philosophy given to the congregations to repeat. This is so they attain more favors from God. So अगर आप repeat करने वाले, God को आपके ऊपर favor करने वाले हैं और आपको जन्नत में अभी ज़्यादा हूरों को देने वाले हैं, ठीक है? But the concept of the 99 names is not unique to Islam. It, like everything else, it's a tradition that comes from Arabs who हम्म inhabited the land before Abrahamic religions came along. Okay, and हम्म उन्होंने ये जो फोर्ट है, मकबरा है, उन्होंने खरीद लिया और उन्होंने ये जो नाम है उसको कन्वर्ट किया. Arabs it's a tradition that comes from before the Arabs. This land was a Vedic built. The science was forgotten, and its parables converted into traditions and made into religious philosophies. In Vedic knowledge, um, 99 names were the 99 properties of electrical energy. Okay, we know that electrical energy has properties, and 99 properties of electrical energy were those names. And if you go to the pyramid, you will see a sarcophagus at the bottom of the pyramid, and that sarcophagus was actually an electromagnetic conductor. So all these areas, all these big monuments are constructed, have sarcophagi at the bottom, and they're all electromagnetic terminals, and the name the 99 properties of electrical energy were carved onto it. So we have electrical energy in the Vedas. In chapter 1 of Thara Veda, hymn हम्म 7 is there. I'm not going to go to both time lagega. Chapter number हम्म 4, hymn 38, we have one. We have electrical energy in the Rig Veda. We have electrical, and on and on and on it goes. There's a lot of energy in this in the Vedas. So Vedas, we yeah. know that this was a Vedic monument with 99 electrical properties written on it. And because it's written on it, all they had to do was convert. They did the same thing in other groups also. If we go to Angkor Wat, Angkor Wat Ankarwar, Cathedral, yeah, yeah. उधर भी sarcophagus है. हम्म Okay, so I think सब लोग को जानते हैं phenomenal travel videos. प्रवीण मोहन नाम है उसका, बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत काम करते हैं. उसने एक वीडियो लिखा रखा है, अभी YouTube पर है, आप देख सकते हैं बाद में. मैं आपको बता देने वाली हूँ. It talks about secret underground passages of the Taj under the tombs. Okay, ironically ये जो entrance है, secret underground passages, they are no secret नहीं है हमारे लिए, क्यों हमें पता था हम्म पहले से. They exist under the marble platform, जो समाधि के marble platform है, जो समाधि बनाया है उसके नीचे और आप देख भी सकते हैं. One, so you can walk outside the mausoleum, and on the left hand side,
On the set of stairs going to the basement is right in the center of the main doorway. You see a set of stairs. Those are going to the underground tunnels below. However, it is now covered and sealed, just like the flights of stairs around the Taj, because it was open at one time. Okay, when in the 80s Yeah. and 90s, khula hua tha. Yes, yes. Now, this caught my eye in the 80s and 90s. At least one of these passages were open, and I went downstairs with my family on a trip during my summer holidays. Hot and sticky, it was smelly and suffocating, both smelly tha. Uh, and you could remember the underground passages. The mausoleum on the top was much cooler. Okay, so the question arises: why did they close these passages? Hmm. Because our government, वो जो गांधी का सरकार था, for the last Hmm. 60 to 70 years, Hmm. thought that the mummified bodies of the emperor and empresses could decompose. But this is a farce. ये तो, it's a Hmm. farce, because the Hmm. bodies are in sealed tomb, so they cannot decompose. ये जो passage है, उससे वेंटिलेशन शाफ्ट हो, उन्होंने वेंटिलेशन शाफ्ट नहीं बंद किया, उन्होंने सिर्फ वो जो स्टेयर्स जो है वो बंद किया, ताकि हम नीचे जा जान नहीं नहीं सके। सकते, okay, ताकि हम सवाल नहीं पूछ सकते. Basically, they do not want people to enter. So if these chambers are not really sealed, what are they hiding? At the Hmm. rear end of the Taj, which is what would have been the original royal entrance, um, the entrance was at the river level. As mentioned, royalty would get off at the boat and go to the mausoleum. So the boat se aate the aur mausoleum par jate the through the stairways to the main floor, and out to which is now the front. These stairways are now sealed. The door still existed during the 1970s, और एक अमेरिकन का आर्किटेक्ट था, उसका नाम है Professor Marvin Mills, took a picture of the door and a piece of wood and sent it for carbon dating. It showed that the door predated the Taj by 200 years. So I'm saying, Oh. okay. So, and there's a book on it. I've bought it. You can buy it. It's online on Amazon. Professor Marvin Mills. Okay. So great. I say, now what? Why the sealed passages? Where do these passages lead to? Why did Shah Jahan choose his particular piece of land when he could have chosen another? Well, ये जो phenomenal travel videos है जो प्रवीण मोहन है did some research and found out that the local area says that the mausoleum is an ancient temple to Vedic deities that still exist underground. The temple is now converted to a mausoleum, which we call the Taj Mahal. Hence, they try to throw money or small offerings through the ventilation shafts, hoping it will fall in the temple below. So ये जो shafts है, आप देख सकते हैं जो अंदर है, और लोग Hmm. पैसे डालते हैं. ओके, हमें पता है, आज भी हैं, आज भी देख सकते हैं वो, उसकी वीडियो पर है, आप देख सकते हैं. अ, ये जो इट सीम्स रिडिकुलस टू यू, ओके, बट लोकल लोग जो है वो तो Hmm. सीरियस लगता है. द एंशिएंट टेंपल, ओके, एट दिस साइट, जो असली मंदिर था ये साइट पर, उसका नाम था बादल घर. बादल मीन्स क्लाउड्स, घर Yes. मीन्स प्लेस. House. Yeah. Hmm. Home, dwelling, stronghold, abode, and this, in case of this place, a bastion or a fort. In ancient times, all Indian towns and villages were built within a fort. Ghar came from the Sanskrit word graha, which means Indra. sphere, Hmm. planet, cosmos, abode. And that's why Emperor Akbar, when he called this area the abode of the caliphate, it comes from the Sanskrit word graha. Okay, um, so the temple to the heavens, or the cosmos, universe, heavenly sphere replicated on earth. So that is what he's trying to say. Very much like the pyramids of Giza, aligned with the constellation of Orion. Now, it is ironic that the Mughal emperor started with Akbar, just rebranded a name to call it the abode of the caliphate. So this was all already Badalgarh, this area. अकबर के फोर्ट जो है, आगरा के फोर्ट भी है, बादलगढ़ फोर्ट, और उस पर लिखा हुआ है संस्कृत हिंदी में. इन्हीं उन्होंने फारसी में बदली किया, abode of the caliphate. The caliphate means empire that is led by the caliph. A caliph Hmm. is the successor of Muhammad, who is a messenger of God,
and he's the creator of heavens and earth. So basically, all he did was rebrand the original name of the region from Hindi Sanskrit Badalgar to abode of the Caliphate Akbar. As it was Akbar who was the first Mughal who colonized the area. The locals also believe the underground tunnels run 270 kilometers. Now, the team at Phenomenal Travel Videos, who are really both अच्छे लोग हैं, have done great work on this project, and they researched the area for anything and everything relating to the tunnels. जो tunnel जो है बादलगढ़ का जो असली नाम है इसका, उन्होंने रिसर्च किया एंड उसको टाइम नहीं लगा मिलने के लिए। ये जो आगरा फोर्ट है, उधर उसके ऊपर लिखा है बादलगढ़ फोर्ट, ये तो सरकार के लिखा हुआ है। प्रायर टू द मुगल्स कैप्चरिंग द एरिया, इट इज ओनली, ये अकबर का फोर्ट, आगरा का फोर्ट सिर्फ 2 किलोमीटर ताज से है। इट सीम्स दैट अकबर्स ग्रैंडफादर एम्परर अकबर कैप्चर्ड इट, rebranded the fort, and उसका इस्लामिक का छापा लिखा है उधर। Officially, the Indian government has not confirmed this, saying it was Akbar who built it. However, the plaque on the fort front, जो fort के दरवाजे पर है, वो clearly बताते हैं, हिंदी में सरकार नहीं डाला है, ये जो बादलगढ़ फोर्ट है। हाँ, और ये लेकिन they don't want to confirm it क्योंकि उसका वोट बैंक है, तो वोट बैंक को बहुत गुस्सा आएगा उसको। On entering the fort, the team of the Phenomenal Travel Videos team looked at the underground tunnels, which they found. Then all tunnel from a rectangular passageway that goes underground. It is not used anymore to prevent accidents. However, they found the passage locked from inside, not outside. Meaning the underground passage is still used by staff for maintenance purposes, probably. There are also found ventilation shafts going down underground all over the fort. If you peep down through the tunnels, through the shafts, you can see elaborate passageways, well conceived and integral part of the fort. There are arches and pillars, आठ साइड का पिलर होता है, not abandoned, and it's clearly still in use. आगरा फोर्ट की नीचे ये जो पिलर है, ये पैसेजवे है, और पिलर आर्ट साइड का है, ये तो क्लियरली हिंदुस्तान हिंदू वैदिक आर्ट का है। This proves that the government or the ASI is aware of the underground tunnels, probably an ancient city connecting the Agra fort to the Taj. Okay, so ये हमें छुपा क्यों रहे हैं? ये कौन इसको पैसा दे रहे छुपाने के लिए? How many tunnels are there? Okay. On a quick side note, growing up, जब हम लोग छोटे थे, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के समय पर वो जो हम बच्चे थे, so when we saw the Babri Masjid, it's not very far from here. So मैंने मेरे अपने आप को सवाल पूछ लिया कि शायद all सबकी सब्जी जो मकबरा है, जो बाबरी मस्जिद है, ज्ञान वापी मस्जिद, शायद उसके नीचे सबके नीचे अंडरग्राउंड पैसेज होगा, तो हर एक को कनेक्ट कर सकते हैं। So maybe there are tunnels, but we don't know. No one has ever searched. हमारे सरकार तो कभी नहीं कुछ नहीं करने वाले। So at least now I'm convinced that the Taj Mahal was already standing of Shah Jahan on his successor's rhetoric that he built it. Okay, it was हमें पता है अभी, हमें proof है कि ये शाहजहां ने खरीद लिया, उन्होंने बना नहीं दिया। His story, लेकिन उसके ये जो कहानी है matches the story of the Cathedral of Cordoba in Spain. ये जो स्पेन में जो चर्च, एक चर्च है कर्दोबा का चर्च, ये बोलता है कि ये जो उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने नीचे कर दिया और उन्होंने एक मस्जिद बना दिया जो कर्दोबा का फोर्ट है। अभी तो कैथीड्रल है, चर्च। उसने बोला कि नहीं हमने बना दिया, क्रिश्चियनिटी बोल रहे नहीं हमने बनाया, दोनों ने नहीं बनाई, ये तो रोमन वाला का था, पहले से ही रोमन वाला का था। रोमन वाला ने ये चर्च वाला क्रिश्चियन बन गया, तो क्रिश्चियन लोग ने लिया, क्रिश्चियन से अभी इस्लाम पर गया और वापस क्रिश्चियन पर गया। So it matches this thing. Okay, Islam says the ruling caliph at the time purchased one part and the whole church from the locals at the time. He then tore it down to build the cathedral, and they call it a mosque, the Cordoba Mosque. No documents, एक भी document exists नहीं showing the Islamic occupiers actually built the mosque after tearing it down.
एक्सेप्ट द बुक, एक किताब है जो 200 साल के बाद में लिखा है कि हमने कर्दोबा कैथीड्रल और मस्जिद को बना दिया. All the Arabs of the time did was rebrand the church, which itself is a Roman fortress to a mosque. History repeats itself. So वो भी वहां ऐसे ही किया, उन्होंने रीब्रांड किया. उन्होंने बोला कि हमारा है, मैं आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म, एक पूरा एक दिन पूरा उसके ऊपर भी कर सकती हूँ कि ये बिल्कुल रोमन फोर्ट्रेस है. ये कभी भी ये एक मस्जिद नहीं था और चर्च भी नहीं था. उन्होंने बाद में ये जो साम्राज्य आए उन्होंने कब्जा किया. So to ओके. come back to the Taj and emphasize the case, हमें पता है कि ताज के underground tunnel जो है, it's leading to the, it's most likely leading to the Agra fort, which also existed when the Mughal Empire invaded the land. Okay, now as I mentioned above, the Taj Mahal is formerly a Badalgarh temple, and the Agra fort is formerly the Badalgarh fort. And was more likely dedicated to the clouds and the heavens and the cosmos, showing a resemblance to the period of Giza. I wondered if the pyramids of Giza also share something in common with the Taj. Okay, ये जो शायद कुछ होगा pyramids of Giza और ताज के आसपास में. I knew more or less what I was looking for, लेकिन मुझे सबूत चाहिए था. लेकिन जब मैं सबूत की जांच किया, मुझे जल्दी मिला. एक यूट्यूब के चैनल है यूनिवर्स इनसाइड यू, एंड मैंने उसे I took proof, I took proof from them. I took authority from them to use their videos. So Universe Inside You came with a video on the pyramids of Giza, and they talked about the Egyptian pyramids, why they were built. Taking two step backs, the Indian scholars have known that our ancient temples were encyclopedias of knowledge. So temple जैसे हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, ये तो ऐसे नहीं था. पहले ज़माने में they were big encyclopedias of knowledge. They taught about cosmic knowledge to you. And the rishis and the sages, जो पंडित और ऋषि जो गुरु थे, वो mathematicians था और architects था. ये हमारे ऐसा पंडित लोग नहीं था. The temple itself was a mathematical and astronomical metaphor to the cosmos on earth. So ये जो हमारे मंदिर थे, जो सब मंदिर है, ये जो हर मंदिर जो थे, an astronomical and mathematical metaphor of the cosmos to earth. Every arch and dome and idol carving had a meaning, and that was not there to look pretty. This was so because the temple itself was a school of ancient knowledge. There were universities at that time and the centers of dialogue and debate. So to believe the pyramids of Giza was an ancient center of learning and discourse was not far-fetched. But what they were teaching or producing at the same time, the science of the universe, the electromagnetism and the astronomy, that is what our cosmos is made up. Could it have been that the Taj was an electromagnetic terminal at one time? If you go back to those YouTube documentaries, fascinating, and I will go through it very quickly with you, and then we'll finish this. The pyramids are they realize are built in the same material today as electromagnetic conductivity. बहुत सारे लोग को जानते नहीं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे समय में सदी में नहीं इन्वेंट किया. पुराने हमारे वैदिक टेक्स्ट में भी था. और हमें पता है कि बगदाद बैटरी है, पार्थियन बैटरी को मिला, इराक में कब्जा किया. और आई एम गोइंग टू शो यू दैट द ताज इज बिल्ट ऑफ द सेम मटेरियल एज द पिरामिड्स ऑफ गीजा. Okay, and they are actually at one point it would have been an electromagnetic terminal. Okay, so ये जो लाल में लिखा है, ये जो ताज का है, जो काले में लिखा है, ये जो वो जो पिरामिड. So the pyramid, it's built with white polished limestone. Okay, white polished limestone that was used as a casing rock. जो बार जो है casing rock है, white polished limestone से बना हुआ है, and it's a flat smooth surface. It is perfect for insulation. It meant enormous amount of light would have reflected from its surface. ताज में white marble इस्तेमाल किया गया. Marble एक metaphoric rock produced rock है जो from limestone
It comes from limestone, which is in the earth's crust. It's formed Hmm. by the metamorphism of limestone. On the pyramids, dolomite was used for the inner surface. It is white, polished, and slightly radioactive. It is known to increase electromagnetic conductivity directly relative to the amounts of pressure. High pressure creates more electrical current. It can insulate from interference from cosmic rays without adding to the background of radiation levels. Taj में, okay, there are angled tunnels going deep underground the pyramids. ताज में भी ये underground tunnels है और ये बहुत unexplored है. So limiting these passageways is in the pyramids, lining these passageways is granite, which is slightly radioactive. It contains quartz crystal with metal. Quartz crystal is a well-known conductor of piezoelectricity that occurs as a result of stress on the quartz. अभी ताज में semi precious stones like agate and onyx were used in the Taj, which are a variety of quartz. ताज इज मेड ऑफ सैंडस्टोन से बनाया हुआ है. जैसे मैंने बोला पहला, ये सैंडस्टोन का मॉन्यूमेंट है, ये मार्बल का मॉन्यूमेंट नहीं है. सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक. इट इज फॉर्म बाय कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सैंड मिलियंस के सदी के बाद. सैंडस्टोन is made of sand cemented by silica, iron, and lime. It is a quartz based stone. It is one of the hardest and toughest materials. It is even harder than granite. Sandstone is mined by quarrying. Commonly, sandstone is quartz. It is likely used for stonecraft, and sandstone has great features of high mechanical strength. That's why इसलिए इतने सदियों से चल रहा है, कुछ हुआ नहीं इसको. Hmm. So we see that in the pyramids, a mysterious mortar called gypsum, which modern technology cannot replicate, was used. It's stronger than stone, could withstand a lot of pressure, and the gypsum barrier allows for thermal barrier, which is a system thus reducing thermal bridging. The above materials are the same items we use to make electrical wires today, as it shares a relationship with pressure, which increases their electroconductivity. And possibly all these materials were used to serve a purpose to create electricity. In the pyramids, northwest of the Great Pyramids is the Sepharim of Saqqara. There lie 20 sarcophagi, each weighing 100 tons. Supposedly crypts. However, it could be used as batteries or as energy capacitors. A container containing serving as a battery or energy capacitor must be made entirely of the same substance. So Taj Mahal में और Angkor Wat में Cambodia, at the bottom, ये जो bottom है, जो मकबरा के नीचे है, ये जो एक sarcophagus like crypt है, ये जो sarcophagus है, जो उन्होंने वो कबर बना दिया. हमने बोला कि दो कबर है, एक ऊपर है, Hmm. एक नीचे कबर है. ये जो कबर था, जो 90 अल्लाह के 99 नाम लिखा है, ये तो असलियत में sarcophagi था. उन्होंने उसको कबर बना दिया. In both these monuments, there's a shaft leading to the burial chamber. The temple is built around the crypt. So, ये जो मैंने बोला कि ये जो staircase है नीचे जाने के लिए, दी असलियत में पुराने जमाने में शाफ्ट था, जैसे हम पिरामिड में वही जैसे शाफ्ट है नीचे जाने के लिए. Now, in the pyramid, Queen's Chamber contains carefully constructed copper wire, instructions on the wall as symbols on the floor, which appear to show a diagram. If one runs electrical current through a copper wire, the coil will produce a short magnetic energy. There's a windowless room. ये जो खिड़की नहीं है pyramids में, ये जो sarcophagi है, वो जो खिड़की नहीं है. The copper wiring could create high potential on one wall, which transfers energy to a lower potential on the other wall, thus creating electromagnetic energy. वो जो ताज में है, हमने बोला कि दूसरा कबर है, वो भी उसमें खिड़की नहीं है. समझ Hmm. में आई? Okay. Hmm. The energy generator for the pyramid is a catalyst from another source. Pyramids are located over power
natural generators, underground rivers or aquifers. The Nile River flowed directly below the pyramids at one time. एक बार जो नाइल नदी का था वो जो पिरामिड के साथ में था, अभी तक थोड़ा है लेकिन अभी तो रेगिस्तान बन गया. ताज is located यमुना रिवर के नदी के ऊपर. Okay, so the for the pyramids, the piezoelectricity could be harnessed from the currents below the water. If water was a source of power, it would travel up the limestone, and based on capillary action, water flowing below or near or underneath the pyramid could have been absorbed as it passed over the limestone, even traveling upwards. Okay. I'm not going to go through all of this because it's too much for you. The geographical location of the Great Pyramid is located at a spot where the electromagnetic forces are magnetified. The telluric current would be the strongest. Okay, and similarly, हर एक मंदिर जो हमारे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बनाया है, और जो गर्भगृह है, जो मंदिर के गर्भगृह है, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट where the magnetic energy field comes in contact with the water. आपको पता है कि हर एक मंदिर के सामने एक नदी है या एक वाटर टैंक है, क्योंकि we need water. It is the highest electromagnetic point in that place. That is where the Garbhagriha is located in the temple. And similarly with the Great Pyramid. Okay, um, if it was gold, okay, so um, now the pyramid could be capped with gold. If it was gold, it would create a conductive path of energy to be directed upwards high in the ionosphere, the atmosphere of the earth, into the clouds and the heavens above. In Hindi, Sanskrit, Badal Ghar. That's why they had this it was an electromagnetic terminal. The terminal was to conduct energy, and the energy would go high in the into the ionosphere, and ये तो wireless energy बनता था, electromagnetic wireless energy. और because it's going up so high in the cloud, in हिंदी उसको बादलगर कहते हैं. और ताज की ये जो असली नाम है, पिछले जमाने का नाम था, वो तो बादलगर टेम्पल था, मंदिर था. और ये जो स्थान है, अकबर का फोर्ट है, आगरा का फोर्ट है, वो तो बादलगर फोर्ट बोलते थे. If the superconductive materials were used, something more amazing could be possible: wireless energy. Nikola Tesla found out this wireless energy in 1893. लेकिन हमारे पुराने जमाने में लोगों को पता था, हमारे विद में लिखा है, हमें पता है, और ये अभी प्रूफ सबूत है कि ये हो सकते हैं कि ये वायरलेस एनर्जी था पहले. So long distance transfer of acoustic energy can be converted to kinetic energy if the frequencies match. If there's a magnetically oscillating current, you could create a second possessing the same energy. The wireless transmissions could pass through solid materials and through long distances. So we see that in the Taj, there exists west of the main mausoleum on the Taj grounds called a Naubat Khana or Nakkar Khana. It is a term used for drum house or orchestra pit during ceremonies. Acoustic energy. ये जो Naubat Khana है, Nakkar Khana है, it was used originally for acoustic energy. Drum houses, ये जो Nakkar Khana, Naubat Khana, also exist at the Red Fort and Amber Fort in Lucknow. ये बोलता है कि ये उनका एक गेस्ट हाउस है, दूसरा बोलता है ये एक म्यूजिक हॉल है, लेकिन असलियत में it was an acoustic energy center for kinetic energy. Now हमें पता है कि ताज के ऊपर एक त्रिशूल है. Pyramids के ऊपर obelisks acted as a tall receiver, particularly if there's a quartz stone on the top of it. जैसे हमारे minaret जो हैं of the Taj Mahal and Qutub Minar, जैसे वैसे ही there was an obelisk. These ये जो minaret होता है, असलियत एक जमाने में होते थे. They were receivers for wireless energy. And वही जो हमारे कुतुब मीनार था, वही है एक receiver. It was a receiver for kinetic energy. It was not a minaret for ये जो दिल्ली सल्तनत का. So
ताज के ऊपर एक त्रिशूल है at the center of the dome. ये बोलता है कि इस्लाम का चांद है, ये चांद नहीं है, ये त्रिशूल है. The Ankh, which was conducted and directed electromagnetic energy into the ionosphere to where it generated and transmitted electricity wirelessly to the receivers in the rest of the land. This electromagnetic measurement around the pyramid is equivalent to that of an electric storm. The Grand Pyramid of Giza is 8-sided, like the Taj Mahal and the Angkor Wat. So, while the pyramids are perhaps a compact energy generator. Okay, now I'm just going to show you the last bit here. The Taj Mahal is not the only electromagnetic terminal. The Bosnian pyramids are there. They are also electromagnetic terminals, similarly to Agra Fort. And the Taj is sitting on the 78th longitude in India. If you match the other monuments, you will see there are many other monuments, मंदिर जो है जो ये ही 77 या 79 तक longitude पर वो ही है, because they were actually, in my opinion, electromagnetic terminals at one point. So we're looking way, way beyond Islam that these monuments were created. The Humayun's tomb, Uttar Pradesh, 77 longitude. Akbar tombs, Uttar Pradesh, 77.57. Agra का फोर्ट जो है 78.1 longitude. ताज महल जो है 78.4. तिरुवनकलियल कवल तमिलनाडु 78.7. केदारनाथ उत्तराखंड 79.90. Kaleshwaram, Telangana, 79.90. Kanchipuram, Tamil Nadu, 79.70. Chidambaram, Tamil Nadu, 79.69. Tiruvanmalai, 79.07. Rameshwaram, 79.31. So you see all these temples, ये सब जो मंदिर है 79 डिग्रीज के आसपास में बनाए हुए हैं. All ये जो बिल पानी के नदी के सामने है, वो स्थित है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसीवर्स थे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सब मंदिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बनाए हैं. शायद इसलिए ताज ने उसको राउजा ई मनूवरा का नाम लिखा दिया, क्योंकि इल्यूमेंटूम, राउजा की मनूवरा मतलब है इल्यूमेंटूम, मतलब बिजली से लिखा. लेकिन ताज के मुगल के ईरा में, उस शताब्दी में वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था. शायद पिछले जमाने में था कि कहानी रह गए, उन्होंने कहानी लेकर उन्होंने दूसरा नाम लेके. So the Taj, it's certain that there was no electricity during the Mughals' time, and the locals would have remembered the storyline and advised the new owner of the Mahal. So, not to upset the Mughals, they would have changed the language of the original name given to the monument, and they would have kept with the same theme. So, शाहजहां ने झूठ नहीं बोला, वो उसके समय ने उन्होंने झूठ नहीं बोला, उसने असली कहानी रखा, उसने लिखा दिया कि उन्होंने खरीद लिया. लेकिन आज के जमाने के लिए ये लोग हैं, और ये जो कांग्रेस का सरकार को वोट बैंक चाहिए, उन्होंने बता दिया कि हाँ ताज ने मुगल ने बनाया, बिना जांच करके, बिना सोच के, बिना देख के उन्होंने बोला कि हम सब लोग उसके वोट बैंक समझते कि उन्होंने मुगल ने बनाया. लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है कि शाहजहां का प्रॉब्लम है, हमारे इधर का है कि लोग झूठ बोल रहे हैं. सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन बाकी है, ओपन अप द ताज. Yes. So that is my presentation for today. Thank you very, very much for it, and I Thank really you so much. Thank you so much. It was really lovely, very, very informative for everyone. मुझे लगता है बहुत लोगों को बहुत information, I think थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन there is a lot of information जो we never even thought about it. Your research has really paid off, because you really have done a thorough research on this full thing, and you have explained it so very nicely. I think सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से explain किया. और दूसरी बात ये भी है कि मतलब कुछ तो है जो चीज छुपाई जाती है, क्यों बंद कर दिया गया है, क्या मसला ऐसा आया कि इनको वो स्टे केस बंद कर देना पड़ा. और काफी समय तक, मुझे भी याद है कि काफी समय तक ये खुला था. Anyway, but the full thing, like, the presentation that Ali has given is really wonderful. If you really if you
whatever she has shown, like the Rajput के जो होते थे, जो जिस तरीके से उनका आर्किटेक्ट होता था, similarly it is in Taj, because even I have seen Taj, so I can now reconnect कि हाँ इस तरीके की जाली बनी थी, इस तरीके का था. It is really informative. Thank you so much, Ali. Ali के साथ मैं एक और स्ट्रीम करना चाहूंगी, maybe not this week, next week, about Dalits, and she is again going to present us with a lot of information. And today's your presentation was very nice. I think जो भी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जिनको रुचि होती है, वो जरूर इसको देखेंगे और शेयर करेंगे और समझेंगे that actually so much of hard work has gone into it. Really, Ali, thank you so much for joining. I really appreciate your time and your presentation. Thank you so much for आपको being भी there. बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको कोई सवाल है हमारे लिए? I don't think so, because people have just given their opinion mostly. Like they just wanted to ask. Matlab, they wanted to know. A lot of people have actually given their opinion कि किस तरीके से हर जगह, if you go to see most of the places that has so many statues or temples निकल आते हैं. सब कुछ दबा हुआ है तो होता है, और जब ये निकलता है तो देयर आर लाइक 9,000 पुराना स्टैचू निकलता है या कुछ, सो दैट मीन्स दैट फुल everything was Sanatan, everything was Vedic before all this thing came up. So everything was that, and it was really lovely. For next time, your presentation has to be on Dalit and whatever you have said, so we'll do it next time. So for today, thank you so much. बहुत 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 आभार आपका. थैंक Thanks यू a lot. वेरी मच। जस्ट वांट टू से दैट Thank मेरा फेसबुक पेज है रिलीजन रेजिम और रेफ्यूजीज, और मेरा हब हॉपर का पॉडकास्ट है, आप उसके ऊपर मिलने वाले हैं। सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस यू वांट। सो फेसबुक पर जाइए, you. रिलीजन रेजिम्स और रेफ्यूजीज। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत Thank बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। या तो आज हमने ये जो प्रेजेंटेशन था, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और आप सबको बहुत पसंद आया होगा। मतलब इतने गहराई से तो हम लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम वही पढ़ते हैं जो हमको पढ़ाया जाता है। बहुत लोग कहते हैं ऑफ कोर्स कि ये मंदिर था, बट इट वाज फ्रॉम अ राजपूत के क्लैन से ये लिया गया, ये ऐसा हुआ, ये सब हम नहीं जानते थे। लोग अगर ये कहते हैं कि हाँ वो एक टेम्पल था, वी सेड ओके, हो सकता है टेम्पल था, तो इनकी तो आदत ही होती भाई कहीं भी तोड़ो फोड़ो और अपना ही बना दो। लेकिन इसके पीछे इतनी बड़ी हिस्ट्री है और इतना रिसर्च है, इतना ज्यादा इन्होंने रिसर्च करके जो ये पूरा प्रेजेंटेशन दिया है, it was really her hard work and it was really worth watching. Thank you so much for joining. बहुत बहुत आपका आभार. I know that there was little bit of English, little bit, क्योंकि वो बेचारी जितना जानती है उतना तो हिंदी में एक्सप्लेन कर सकती हैं वो, but it was really wonderful. It was something different that I did this time. I hope you liked it. Thank you so much. बहुत बहुत आपका आभार और बहुत प्यार, और शुभ रात्रि। मेरे को सोचना पड़ता है। शुभ रात्रि। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा जिनको हिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद है और जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट ताज, प्लीज डू शेयर, एंड जो पहली बार जुड़े हैं प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बटन ऑन रखना, बिकॉज आई कीप ऑन पुटिंग सम इंटरव्यूज के कोई ऐसे पार्ट्स जो हमने बहुत पहले किए हैं, उनको भी देखिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, और जय श्री राम और हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।